thank you, Dr. Ali Khayyam, for joining us today. और I'm joined as usual by Noman and Junaid, जिनको अक्सर मैं introduce कराना भूल जाता हूँ. Sorry about that. So Dr. Ali Khayyam, हम straight away really just go into our discussion with the guest. We have a few questions lined up here, लेकिन basically we kind of take the discussion as it goes. Primary हमारी audience higher education professionals, academics, policymakers, hopefully students as well. Or but obviously हम guests जो हैं, we're going to bring as much variety in the guests as we can. तो आप ही से पहला question straight away going into your own professional history. So tell us about your professional life leading up to where you are now. Thank you for having me, Waqar and Noman and Junaid. You still didn't introduce them, but I do know them, so that's okay. You still forgot to introduce them, but yeah, yes. I know them, so we can skip उनका नाम लेना ही भूल जाता है पहले कभी-कभी. तो अभी मैं नाम ले लिया. Probably he thinks we don't need any introduction. हाँ, तारुफ के मोहताज नहीं है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, Noman और Junaid. But सारी spotlight आपके ऊपर है. But it's great to see you. Thank you for having me. It's great to see all three of you. So आप लोग किसी हद तक आपने देखी है मेरी professional journey. So you're familiar with it, but I'll just reiterate parts of it. मैंने अपनी जो original after graduation, I was a hardware engineer. कुछ अर्सा मैंने hardware engineering के अंदर काम किया. I'll try to stay as close to Urdu as possible. लेकिन मेरी इतने अरसे से मैं कराने के बाद उर्दू में कुछ लोग मुझे भूल भी जाते हैं, but I'll try to stay as close to Urdu as possible. तो मैंने हार्डवेयर इंजीनियरिंग में शुरू किया था. 2 साल मैंने तकरीबन हार्डवेयर इंजीनियर. I was a hardware engineer. Then I came from my grad studies in the US. I did my master's and my PhD in electrical engineering from Michigan State. I left the day I graduated, almost the day I graduated. The next week I took a flight. I went back to Pakistan and I started teaching at NUST. NUST पे मैं 5 साल था. In those 5 years, built a research lab, taught courses, built their graduate program. उस time पे वो नया शुरू हो रहा था, तो masters का EE का जो program है, we just sort of built it from scratch. H12 का campus भी इस वक्त ही शुरू हुआ था. From there, during like the 3rd or 4th year, I started consulting for some companies in Silicon Valley. और जी. Before you move on, ये जो NUST वाला question है, can I ask कि क्या ये was this a given choice कि यानी कि इधर ही जाना है, because it seems आपकी story से कि the very next day you landed here और अगले दिन आप NUST में थे, या there were other choices too and आपने किसी basis पे ये वाली choice की? मेरे कुछ constraints थे और मेरा एक bond भी था. So I had a bond. मैंने अपने masters जो है मैं NUST के उसके scholarship पाया था, but that was not the real reason. I could have paid that bond back by that time. By the time I got back, उनको सिर्फ 11 months का scholarship था उस time पर NUST का जो था. तो वो सिर्फ मेरा masters के भी वो पूरा masters भी नहीं था, सिर्फ 11 months था. But the main constraint at that point was कि बहुत सारे choices थी भी नहीं पाकिस्तान में उस time पर. मेरा constraint ये था कि मैंने इस्लामाबाद में रहना था. And if I'm going to live in Islamabad, तो फिर मेरे लिए जो है choices बिल्कुल उस time पर like literally I had 2 choices, NUST or FAST, right? I mean, like I had to pick one of those 2. So my friends at LUMS pitched to me many times कि मैं वहाँ move कर जाऊँ, but I moved back because of family reasons. So I wanted to be close to the family. So choices काफी कम थे इस time. बाकी university जो है NAML, I didn't even know it existed at that time. ComSets was I think very new. If it was even started, I think it was super new. So very few choices existed of universities जहाँ पर आप quality research कर सकें. GK तो यार is in the middle of nowhere. Right. So I couldn't have gone there. Yeah. Makes sense. So thank you. So that's how I ended up in NUST. Or 5 year with about 3-year mark के ऊपर I started getting bored. Research lab was going very well. I had some really brilliant students जो अब अपनी PhDs वगैरह कर चुके हैं. They're professors और या industry में हैं all over the world. But I was getting pretty bored because मुझे लगता था कि impact नहीं create हो रहा. It's a very narrow scope of impact. Started consulting for some companies in Silicon Valley, NUST के platform से ही, and then with some students. उधर से फिर finally just things one thing led to another, things started picking up. तो the day वो tenure की मेरी discussion शुरू हुई तो मैंने NUST में resign कर दिया because I realized कि अगर मैंने इसको continue नहीं करना as a profession for the rest of my life, I should really not be taking a tenure track position. अच्छा. Yes. Sorry to interject here. No, keep interjecting.
हाँ नहीं तो इसको इंटरेक्टिव रखते हैं बट गिवन योर प्रोफाइल एंड व्हाट वी नो अबाउट यू ऑफ कोर्स आपको अलोंग द वे पेटेंट्स भी आपने फाइल किए हैं आपका रिसर्च ट्रैक भी बहुत ज़बरदस्त था आपने कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स का भी जिक्र किया एंड इट सीम्स कि आपको एचईसी से और आई गेस नस्ट से भी बेस्ट टीचिंग अवार्ड बेस्ट रिसर्च अवार्ड और इस तरह की ऑनर्स भी मिले हुए हैं एंड येट यू से कि यू वर गेटिंग बोर्ड या इम्पैक्ट नहीं हो रहा था तो आई एम गेसिंग कि एक जो नॉर्मल नहीं बल्कि मतलब ग्रेट एकेडमिशियन which you were clearly उसके लिए तो ये काफ़ी सेटिस्फाइंग किस्म की चीज़ें होनी चाहिए कि ये उसको ये अवार्ड में रिकग्निशन यानी कि यू आर बीइंग रिकग्नाइज आपका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स की फॉर्म में क्लासेस में भी आप इफ़ यूर बेस्ट टीचर तो आप वहाँ भी क्रिएट कर पा रहे हैं तो बट व्हाई डू यू से कि इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा था couple of different दो तीन different questions इसके अंदर मैं उनको tease apart करके आंसर करने की कोशिश करता हूँ पहला क्वेश्चन ये है कि was it all the awards that I got I think आप जैसे smart लोग उस वक्त पाकिस्तान वापस नहीं आए थे तो the baseline was not that great so I don't know but yeah it was a privilege to get best teacher and vet research in 2 years in a row it was a real privilege but मैं जो रिसर्च थी हमारी टॉप नॉच थी लाइक दैट्स अ बार दैट वी सेट राइट उस टाइम पर लोग पब्लिश करने की कोशिश ही नहीं करते थे टॉप टियर कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एंड आई केम बैक और मैंने कहा कि उसके अलावा हम सबमिट भी नहीं करेंगे आपके फैकल्टी मेंबर नंबर में भी हैं मेरे जो स्टूडेंट हैं तो अदनान एक दफ़ा जो नहीं वांटेड टू सबमिट समवेयर तो मैंने कहा यार सबमिट तो कर दो फिर वापस आना कल से लैब में So I would not even let people submit to bad conferences or bad journals, right? We kept the same bar जो मैं अपनी अमेरिका में जो रिसर्च कर रहा था वी हैड द सेम बार एंड उसी की वजह से लोगों को आगे अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती थी कि वो इवन बर्कले और मैनी यूनिवर्सिटी यूएस यूके में जाके जो अपनी फंडेड पीएचडीज करते थे लेकिन इट वाजंट रियली अबाउट रिसर्च के पाकिस्तान में रिसर्च मैं कम कर रहा था और अमेरिका में मैं ज्यादा कर सकता था यहाँ पे आई बिलीव आई वुड हैव हैड द सेम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अगर मैं अमेरिका में भी रिसर्च कर रहा था क्योंकि यू डोंट बिलीव कि आपकी रिसर्च इज एक्चुअली एंडिंग अप इन पीपल्स हैंड एंड यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट and that is what was irking me like जब आप अपने जो एरिया के टॉप जर्नल और टॉप कॉन्फ्रेंस में जो पहला पेपर एज अ प्रोफेसर पब्लिश करते हैं पहले तो आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम चलता रहता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यू डोंट नो वेदर यू कैन मेक इट विदाउट योर प्रोफेसर वो क्रचेस जब गायब होते हैं तो देयर इज लाइक इज सीरियस इम्पोस्टर सिंड्रोम गोइंग ऑन बट द डे आई पब्लिश्ड इन द टॉप कॉन्फ्रेंस एंड टॉप जो जर्नल्स थे मेरे एरिया के मल्टीपल ऑफ देम इन द सेम ईयर तो उधर फिर अब इट वाज अ वेरी क्लियर चॉइस फॉर मी कि अच्छा इस साल में हमने 4 या 5 बड़ी सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन कर दी जो कि अमेरिका में मैं इतनी ही करता ज्यादा ना करता अगर अमेरिका में भी होता तो नेक्स्ट ईयर क्या 10 कर लेंगे एंड व्हाट डिफरेंस इज गोना रियली मेक राइट सो स्टूडेंट्स की जिंदगी में फर्क पड़ा था लेकिन कितने स्टूडेंट्स की जिंदगी को आप टच कर सकते हैं एज अ रिसर्चर इट्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप आपके साथ 10 स्टूडेंट्स होते हैं एट द पीक ऑफ माय लैब आई थिंक आई हैड लाइक 15 or 17 those are the really at any given year you are not going to be able to impact more than 17 people the people that you're impacting are the one that you're teaching and that was what was fundamentally the decision for me to move out of academia कि मेरा जो point था वो ये था कि research grants भी बहुत हैं लेकिन I want to teach क्योंकि वहाँ पर there's like 100 or more right that you can impact directly and not just once like 100 or more in every classroom Pakistan क्योंकि इतना student to teacher ratio is so off क्योंकि इतनी कम यूनिवर्सिटीज हैं तो वहां पर यू कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट यू कुड रियली चेंज द कोर्स ऑफ आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोचने का तरीका उनके टेक्निकल डेप्थ यू कुड रियली हैव अ बिग इम्पैक्ट बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पूरा एकेडमिक सिस्टम है इस तरह से बना हुआ है कि यू रियली डोंट गेट टू डू दैट आई एम लाइक इफ यू नॉट पब्लिशिंग नॉट ब्रिंगिंग इन द डो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च फंडिंग you got no pull inside of a university in terms of you just are nobody and it wasn't really working for me so impact tha in teaching I saw the impact in research it was too limited I realized that it's just too little of an impact and I should be doing something different very interesting क्योंकि majority तो एकेडेमिया में जो आजकल लोग हैं वो impact factor की proxy को impact ही consider करते हैं somehow so it's very refreshing to I wanted if the NUST had just let me teach and not do it maybe they would have but yeah if that was a thing I probably would have just done that I didn't want to do the kind of research that I was doing I wanted to do something else like that
end up having a real impact. Impact factor is not the yardstick, I assure you. I think I was the highest by a long margin in Pakistan, highest impact factor researcher in Pakistan, by a long shot, both by Google Scholar and Microsoft Academic Search. Highest citations, maybe my almost top by that, but I don't think those are really good metrics of how impactful your research is. So anyway, that's how I used to think back in that day. मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ पॉडकास्ट जो है ना हम लोग को भी थोड़े से एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुए होंगे, लेकिन आई थिंक दैट काइंड ऑफ द पर्पस ऑफ दिस, बिकॉज ऑब्वियसली हम अपने आप को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और होपफुली जो हमारे लिसनर्स वो भी कुछ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे. लेकिन मुझे लग रहा है टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर अली के इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों का टाइम पूरा गुजर जाएगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग आउट जस्ट फ्रॉम डिस्कसिंग योर प्रोफेशनल हिस्ट्री. लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा अगर और एक्सप्लोर करूँ, ये जो एकेडेमिया में इम्पैक्ट थ्रू रिसर्च, आपने जो बात की और आपने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि आपको यही इशू, इट्स नॉट कि पाकिस्तान में आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको इम्पैक्ट फीलिंग हुआ, आप इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली आप कहीं भी करते आपको शायद यही फीलिंग होती. तो was this, do you think you being a different kind of person from other people who might find satisfaction within that role, या आपको लगता है कि fundamentally the way reward and recognition and incentives are given in the academia around the world, I would say, because I think काफी general बात कर रहे हैं, there is something fundamentally wrong there, which is not helping people the kind of make them kind of impact that they could. Yeah, what is your assessment there? I think it's the latter, that's my opinion. Because there's something fundamentally broken in that system, and the incentives and the rewards are not tied to what people should really be doing. Your product is your student, and the student that you teach. This rush to publish and publish more and more, this insatiable desire to publish more and more, I think it is not helping move the needle. मैं आपको अगर सिर्फ डेटा के बेसिस पे ही बताऊं, मैंने ट्रांजिशन किया पाकिस्तान में आने के बाद नेटवर्क सिक्योरिटी में, और दूसरा मैंने उसके बाद फिर अब मैं काफी अर्से से नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहा हूँ तकरीबन एक डेकेड से, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ. तो इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ पब्लिकेशन जो कि टॉप कॉन्फ्रेंस में नेटवर्क में सिक्कॉम है, एसीएम सिक्कॉम है, सिक्कॉम में अगर आप देखें, या एसीएमसी सीएस है, या IEEE सिम्पोजियम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, उसमें अगर आप जाके देखेंगे कितने पेपर जो है ना वो एकेडमिक्स से आते थे पहले 12 years back when we were academics versus आज कितने आते हैं, you will see a huge shift. कि पहले 20% इंडस्ट्री से आते थे, 80% एकेडेमिया से होते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा स्टूडेंट होती थी. अब इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट, 80% जो है ना इंडस्ट्री से आ रहे हैं, 20% एकेडेमिया से आ रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री नीड्स टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम ऑन द डे टू डे बेसिस, और जब सॉल्व करते हैं तो देन दे समटाइम्स डिसाइड टू टेल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अबाउट हाउ दे वांट टू सॉल्व इट एज वेल. Versus academics, I think many of them are just working on problems that are not impactful because they know it's new, nobody solved it, and it'll get published easily. So बहुत कम फंडामेंटल कोई ऐसी रिसर्च मुझे डिसरप्टिव होती नजर आती है आजकल एकेडेमिया के अंदर. तो मेरे ख्याल में वो इंसेंटिव गलत है कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिश करेंगे. There's still some professors, I respect them a lot, जो कि they don't publish a lot. They publish like 1 or 2 papers every couple of years. But they publish something of real consequence, which has a real impact on society. Many of them go to the industry and work with them if they don't have the data to really work on something of that level of impact. So, मेरे ख्याल में we've done a disservice to the entire community by जो rush to publish है, it is not the right incentive. और professors की मेरे ख्याल में job भी ये नहीं है, क्योंकि how many of them I've seen in my whole life everywhere in the world who sacrifice teaching. कितनों से आप पूछेंगे कि आप स्टैक रैंक करना शुरू करें तो टीचिंग कहाँ पर आती है, शायद नंबर 4 और 5 के ऊपर होगी. मेरी पब्लिकेशंस पहले आती हैं, फिर रिसर्च ग्रांट्स लिखना नंबर 2 आता है, फिर सर्विसेज ताकि मैं प्रमोट हो सकूं, कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए सर्विसेज कर लूं, यू नो, लाइक इट लाइक कम्स ऑन नंबर 4 and number 5, and I think that's just fundamentally broken. I'm like, it just doesn't make any sense to me. कि जो है ना, how did we sort of like flip the prism so much, right? So yeah, so keep it, it's not short, but to just answer your question, I think it's the latter. नहीं, हम इस पॉडकास्ट फॉर्मेट का मकसद ये है कि हम लोग क्विक शॉर्ट आंसर्स की तरफ ना जाएं. अच्छा, आप इसी चीज को अगर मैं सिर्फ थोड़ा सा पाकिस्तान वर्सेस वर्ल्ड के ऊपर लेकर आऊं, बिकॉज हम लोगों की ये जो आप बात कर रहे हैं रेजोनेट्स वेरी स्ट्रांगली विद अ लॉट ऑफ डिस्कशंस वी हैड अमंगस्ट आवरसेल्व्स एंड विद अदर गेस्ट्स एज वेल. यूजुअली उसमें हम पाकिस्तान की पॉलिसीज को थोड़ा ज़्यादा लेमेंट कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बहुत ही स्क्यूड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कुछ अरसे से हुई हैं, और उसमें
अंडरग्रेड टीचिंग के ऊपर फोकस करना का कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। हम लेकिन मैं ये बात हम लोग की आपस में होती रही है कि यही चीज टू सर्टेन एक्सटेंट बाहर भी नजर आती है आपको, इट्स नॉट पाकिस्तान इशू एज सच। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान में ये चीज कुछ ज्यादा मैग्नीफाइड है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, या इट्स जस्ट द वे द होल वर्ल्ड इज गोइंग एंड पाकिस्तान इज जस्ट गोइंग अलोंग? अब सब जगहों पर है, पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा मैग्नीफाई हो गई है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस तरह से एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन मैं ख्याल सारी दुनिया में ऐसे ही है। यू डोंट गेट टेन्योर इज दिस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड वेयर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में इसके बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। एक तो लोगों ने, प्रोफेसर्स ने भी बड़े हुक्स निकाले हैं इसको जो है ना बाईपास करने के लिए, दैट्स नंबर वन। बट पाकिस्तान की जो डिलेमा है, एंड आई हेट टू से दिस, बट पाकिस्तान का जो डिलेमा है वो ये है कि प्रोफेसर जो है ना वो काफी, बिकॉज दे कांट पब्लिश इन द बेस्ट प्लेस, तो कोई अच्छी सी पॉलिसीज है एटलीस्ट वो कुछ बाहर रखने की कोशिश करें कि लोग अच्छी जगहों पर तो पब्लिश करें कम से कम, राइट? अब तो वो भी शायद काफी खराब हो गया, लेकिन एक टाइम तक वो they were trying to force people to publish in good places, otherwise आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको कुछ और चीजों पे प्रमोशंस नहीं मिलेगी उस तरह से, अगर इतना इम्पैक्ट फैक्टर का जनरली एंड सो फॉर, एंड दैट वाज पुटिंग एटलीस्ट सम क्वालिटी प्रेशर ऑन पीपल। उसका जो मैंने फ्लिप साइड देखी वो ये थी कि वो लोग पब्लिश भी नहीं करते थे, एंड दे से यार ये बड़ा बुरा सिस्टम है, एंड यू नो ये जो ना इंसेंटिव गलत है, एंड दे सक्ड एट टीचिंग, दे वर सो बैड, राइट? तो अगर आप वो कह रहे हैं देन यू गॉट be freaking killing it at teaching, right? I'm like, अगर आप उस पे teaching पे you're not killing it and you're saying research system भी bad है, then there is something fundamentally wrong, कि you're not even a good teacher, or you don't know your fundamentals, or at least you're not willing to put in the hours to teach it properly. On the other side, आप research system को भी बुरा कह रहे हैं, तो उसको मेरे ख्याल में हमारे professors ने बड़ा deeply abuse किया। I hope things have changed, मैं अपना इंटरेस्ट नहीं अब यूनिवर्सिटी के साथ, I hope things have changed, but I think things have gotten worse. Based on the quality of graduates जो मैं observe करता हूँ, I've had thousands of them in Pakistan, and मुझे लगता है कि वो worse हुआ problem. So yeah, if you want to criticize that system कि उन्होंने कुछ incentive गलत बना दिए, या उनकी बार गलत है, या वो इस तरह की research से हमारा जो है ना time नहीं सही जगह पर लग रहा, and we're not able to publish there, then you better kill it at research, at teaching, right? Which they're not, and I think there's no excuse for it, and people should be fired if they're not inspiring in their classrooms, right? तो अनफॉर्चुनेटली मैं अगर आपको बताऊं फ्रॉम एनेक्डोटल एविडेंस, पीपल दैट आई नो इन पाकिस्तान, द बेस्ट टीचर्स आर आल्सो द बेस्ट रिसर्चर्स। Unfortunately, this was there was a very strong correlation, I would not say causality. तो जो बेस्ट टीचर्स मैंने देखे PhDs के अंदर, वो बेस्ट रिसर्चर्स भी वही थे पाकिस्तान के। And then there were some other people जो कि मैं उनको I respect them a lot, जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स किया हुआ था, but they were doing a really good job at teaching, way better than all of those other PhDs put together. So I think उसका abuse भी बड़ा किया गया पाकिस्तान के अंदर. So and that is unique to Pakistan. If somebody taught that badly in the US, they'll get fired. अली साहब, आपने आइडेंटिफाई किया कि उतना इम्पैक्ट रिसर्च से क्रिएट नहीं हो रहा जितना इम्पैक्ट टीचिंग से पॉसिबिलिटी का क्रिएट होने की आप कर रहे थे, लेकिन फिर आपने ट्रांजिशन बिल्कुल ही अलग कर दी। आप एकेडेमिया को सिरे से ही छोड़ के आप शायद इंडस्ट्री की तरफ चले गए, तो ये किस तरीके से हुआ फिर? जी, I wanted to build things people used, और साथ I wanted to just teach. Like to just teach the fact that I'm sitting on this broadcast at 11 p.m. My time is my little contribution. I do still sit on committees. I'm still funding startups, multiple startups को मैं help कर रहा हूँ जो कि education space के अंदर हैं, university education scale के अंदर, upscaling के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हैं. So I end up spending that time, but not directly working with universities, but working with private entities or entrepreneurs or people I trust in the academia to provide that. लेकिन हाँ, जो fundamental मेरा my beef with academia was they will not just let me teach. And the second thing, I have to make enough money to feed my family as well. So उसके लिए I wanted to build, उसके लिए मैं research की direction में जानता था. I wanted to build things that people would actually use. अच्छा, अभी given के the world over same situation and the priority is like the way you said कि जो number 1 पे होनी चाहिए थी वो ना शायद number 3, 4 पे slide down हो चुकी है, और पाकिस्तान में perverse हो जाती है हर चीज़ ही, क्योंकि वो copy paste वाला phenomena भी आता है, और spirit में चीज़ें नहीं होती. But still I would imagine कि जो बाहर की universities का जो scale है versus जो पाकिस्तानी universities का scale है,
it would still allow someone like you यानी to put your weight behind something. आपका higher up से भी एक relation था उस वक्त I guess NUST में कि आप ये प्रायोरिटीज जो कि सही वाली प्रायोरिटीज के अराउंड कोई पॉलिसी मेकिंग वाला काम, एंड आई एम श्योर आपने किया भी होगा, कोई ट्राई तो की होगी बिफोर गिविंग अप या मूविंग ऑन, उस पे कोई आप एलेबोरेट कर सकते हैं कि द पॉसिबिलिटी, वो मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान में स्टिल एक है क्योंकि यंग यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि जितनी जो पुरानी हो जाती है वो उतनी हार्डन्ड अप प्लेसेस हो जाती है ना, वहाँ तो फिर चेंज एक वेरिएबल में भी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और स्केल्स भी। तो वो अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो वो पाकिस्तान में ज्यादा रियल है, राइट? ये प्रायोरिटीज को वापस शिफ्ट करना, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो हाँ भाई, आई एम नॉट गोना जस्टिफाई कि मैंने क्यों नहीं किया, आई शुड हैव डन मोर, आई एम लाइक दैट इज ट्रू। मैंने कुछ किया, आईटीसी को भी मैंने पूरी, एक्चुअली आई वाज जस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, आई वाज लुकिंग एट माय अर्लियर नोट्स, मैंने जाके एचईसी में प्रेजेंटेशन दी, पॉलिसी मेकिंग इनपुट्स दी, आई पुल्ड अप ऑल ऑफ दोस डॉक्यूमेंट्स, टीचिंग से रिलेटेड एंड रिसर्च से रिलेटेड, तो आई पुल्ड अप अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो मैं उनको पढ़ रहा था, तो मैंने अपने कुछ अभी भी जो लोग हैं जो एकेडमिक से या एजुकेशन से एसोसिएटेड हैं उनमें से कुछ को भेजा भी, क्या लाइक आई कांट बिलीव आई वाज सेइंग दिस लाइक 8 years बैक, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आई थिंक बट यू आर राइट कि वो इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े हो चुके हैं, दे आर सो हार्डन्ड इन देयर थॉट प्रोसेस कि उनको चेंज करना मुश्किल है। वी शुड फोकस ऑन द न्यू वंस। मेरी होप यूनिवर्सिटी से कम है कि वो कुछ चेंज ला सकेंगे, simply because I'm not seeing the kind of talent that I would like to see over there. जिस माने में था जब मैं वहाँ पर था तो I would see like really significant talent as well. उससे पहले तो उससे भी अच्छा था, जो हमारे प्रोफेसर थे वो they were so much better, right? सारे जॉर्जिया टेक से आए थे, डॉक्टर शोएब, डॉक्टर सईद and everybody, right? डॉक्टर फारूक। उसके बाद I saw steady decline। फिर मैंने देखा कि जब मैं वहाँ पर था तो फिर there was like a lot of really good people। आप लोग थे न्यू इंस्टीट्यूशंस में, नमल में मैंने काफी टाइम स्पेंड किया उस टाइम पर, both in terms of policy making as well as other things। अभी स्टिल करता हूँ, आपसे तो जुनेद मेरी भी मुलाकात हुई है, तो एनी बट आई नेवर से दोस टू पीपल, बट आई कुड हैव एंड शुड हैव डन मोर। आई एम नॉट टेकिंग दैट रिस्पांसिबिलिटी अवे। लेकिन मुझे होप बहुत कम नजर आती है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर। इंसेंटिव गलत है, इंसेंटिव ठीक नहीं होने वाले। एजुकेशन में पैसे डालने को गवर्नमेंट तो तैयार है नहीं, और एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर समबॉडी टू कम एंड सेव एजुकेशन, राइट? तो इसका मतलब कि टैलेंट की क्वालिटी ऊपर नहीं जा रही है। जहां पर टैलेंट की क्वालिटी ऊपर जा रही है वो मुझे एजुकेशनल स्टार्टअप्स में नजर आ रही है, जो कि पाकिस्तान में बन रही है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आई थिंक दे आर गोना, वो अपस्किलिंग के हो सकते हैं, वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन पे हो सकते हैं। आई थिंक दे आर गोना हैव अ मीनिंगफुल इम्पैक्ट इन पाकिस्तान एंड नॉट यूनिवर्सिटीज इन द लॉन्ग रन। तो इसलिए मेरा अगर जो टाइम है, द कॉपियस टाइम दैट आई हैव अवेलेबल टू मी, तो मैं अपनी ज्यादा एनर्जी जो है ना उन स्टार्टअप्स के साथ लगाना चाहता हूँ, और कम जो है ना यूनिवर्सिटीज के साथ लगाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी इफ इट comes across a little bit rude। बिल्कुल सही, मतलब ये it has to be real and pragmatic। लेकिन nevertheless if I were to pick your brain, क्योंकि आपने को legwork किया हुआ भी है और अगर इस podcast के बहाने वो रिफ्रेश भी हुआ है थोड़ा सा, कि if you were the sole administrator, तो आप कोई एक मिनिमल चेंज ऐसा क्या करें कि जिसके बाद चीजें लाइन अप होना शुरू हो जाएगी, यानी कि व्हाट इज दैट वन थिंग जो शायद सबसे बड़ा हिंड्रेंस कॉज कर रही है? I would make the funding of the university decision proportional to the employability of the students. Wow. That's it. That's the one change. The incentive would be how many people have you employed, at what rate have you employed them right out of the gate, right? The day they graduated from the university, whether it's grad program, PhD or undergrad. I will tie your funding to the employability of your graduates. That's it. That's one change I'll make that I think can fix the whole system. And this was in my presentation back in 2015. I was saying this. Right, So, right. Funding, yeah, even ranking. Funding, ranking, everything, money. Right. I mean, like eventually ranking, everything is a way to get money, right? I mean, like all money needs to be tied to employability. Right. Yeah, so simple. मतलब measurement का बहुत शौक है, it seems academia को. They keep on measuring everything, but this one is aspect के employ कहाँ हो रहे हैं students? That is so true. Thank you. I don't see any way to argue against that. लेकिन it sounds so simple. लेकिन हम बिल्कुल polar opposite काम चल रहा है इसका। मुझे एक without naming the university, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन हो रही थी कि क्वालिटी और टीचिंग तो बात हो ही नहीं रही थी, सिर्फ क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात हो रही थी। क्या कम से कम बेहतर पेपर्स करें, या पहले हम लोग बस नंबर्स की गेम में रैंकिंग की टॉप पे आ जाएं जरा, फिर क्वालिटी भी कर लेंगे।
let's get the quantity out there first, let's get to the top, let's come in the top 3 or top 1, फिर पीछे से quality भी कर लेंगे. लेकिन the things don't work that way. आप एक mediocre quality या सब mediocre quality आके settle हो जाएं जब, और फिर expand हो जाएं, then you are kind of basically stuck there. वो habits set हो चुके होते हैं ना, फिर तो आप वो institutionalize हो चुकी है वो चीज आपकी. बिल्कुल. डॉक्टर अली, आपकी इस बात से एक और बात ज़हन में आती है कि अगर हम ये जो आपने बताया ना, अगर ये मैट्रिक रखें ना, तो फिर तो शायद पाकिस्तान में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ को मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, तो उनका ज़्यादा फोकस होना ही अंडरग्रेड पे चाहिए. ऐसा ही है क्या? I think masters and PhD programs have their own place in the world, right? Masters आप इसलिए करते हैं because you can build depth and you can build a network that you can carry forward with you for the rest of your life. I think उसकी value है. You couldn't get. बात ये कि हमारा we live in an unforgiving system. आप सब उससे गुजरे में, अगर आपके 9th में नंबर नहीं आए तो फिर आपकी your host मैट्रिक में नहीं आए तो you are dead. If first year में या up to A levels या O levels में नहीं आए, then you're destroyed, your career destroyed. It's an unforgiving system. One misstep, one bad year, one bad exam, your life is over, right? So masters, I believe, provides an opportunity कि अगर आप undergrad में नहीं भी घुस सके, वो जो top 5 हैं in Pakistan, तो आपके पास एक opportunity है कि you can go back and study from the same people because वहाँ पे bar different है, वो bar different होना भी चाहिए. So I think it's master's programs provide. Some of my best students arid agriculture से उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, सवात की कोई यूनिवर्सिटी के उससे पढ़ के आए हैं. They were some of the best that I had. So I think it provides a reprieve from an absolutely unforgiving system जो हमारे उसके अंदर है. तो मास्टर्स की एक जगह है and they come out as finished product. दूसरी बात ये कि हमारे जो लोग इंडस्ट्री में चले जाते हैं वो उस जमाने में कम से कम शायद 3 थोड़ी चेंज हो गई हो. ऑलमोस्ट इनवेरिएबली आपके जो टॉप मेरे स्टूडेंट्स होते थे वो इंडस्ट्री से आते थे and they are a job in the morning and they'll come in the evening putting in their own money because they really want to improve themselves. So उनका जो mindset और attitude था बड़ा different था जो आपका undergraduate student है जिसकी अम्मी सुबह जैम टोस्ट लगा के देती हैं तब भी नहीं खाता. And this was a person who's putting in his own money, his or her own money to actually come and study in that institution. तो उनका जो commitment level था बड़ा different होता था. So I think it provides them a way to upskill themselves. कि मैं चला भी गया industry में, I think I'm lacking and I'm better than this. I'm punching below my weight. मुझे अपने आप को बेहतर करना है तो वो भी masters provide करता है. PhD system has provided us a lot of very brilliant professors. जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, and I think it is also has a place. लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आपका ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है ना वो ऑलमोस्ट द सेम साइज एज योर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम है और उतने आप 100 PhDs हर साल निकाल रहे हैं कंप्यूटर साइंस के एक यूनिवर्सिटी से. दैट्स नॉट अ थिंग. लाइक योर फैकल्टी इज नॉट बेसिकली गियर्ड अप टू डू दैट. लाइक आपके जो अच्छे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके पास लिमिटेड बैंडविड्थ है. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज द नंबर्स एंड द रेशियोज बिटवीन द अंडरग्रेड एंड ग्रेड एंड PhD program makes sense. Like all of them have a place, but all of them should be employable. PhD भी किया तो जॉब तो मिलनी चाहिए थी. अगर आपने PhD कर लिया और आपको कोई रखने को तैयार नहीं है तो then what are you going to do? एक PhD साहब थे, वो आए, हमने उनका इंटरव्यू किया, उनको just some basic faculties के लिए इंटरव्यू कर रहे थे. उनसे हमने कहा कि मैंने कहा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको कोई मीन है? तो उन्होंने कहा जी गॉसियन का डिस्ट्रीब्यूशन तो मीन 0 ही होता है, वो तो हो ही नहीं सकता कुछ और नहीं. अब this is the person who's done a PhD in signal processing. I'm like, how am I going to react to it? I mean, अब तो मैं काफी जिंदगी ने मुझे टोन डाउन कर दिया, but I blurted some stuff that I probably shouldn't have. But इतने बुरे fundamentals वाले लोगों को अगर आप graduate करें वो employ नहीं हो रहे हैं, तो employability is still a metric that you could use to even gauge the quality of your PhD students. True, that's so true. अच्छा, एक चीज मैं आपकी बात से जो infer की, लेकिन please correct me if my inference is incorrect, at least from your point of view, के आपने अपने जो प्रीवियस इंस्ट्रक्टर्स, आपने जो एक्सपीरियंस किया एज अ स्टूडेंट या क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, उसमें आपको एक तो डिक्लाइन फील हुआ और इट सीम्स टू कोरिलेट. सो इज द कोरिलेशन देयर एंड इज देयर कॉजेशन देयर विद, फॉर एग्जांपल, HEC इन्वेस्टिंग हेवीली इन PhDs first of all and change in policies in terms of the promotion and publications. आपको ये कोरिलेशन एंड मोर देन दैट कॉजेशन क्या नजर आती है इसके अंदर?
मुझे पता नहीं इस वक्त पॉलिसी है क्या, and if I'm being brutally honest, I can say this now, I guess 10 years later, I never looked at their promotion criteria when I was in academia, because I said whatever it is, I'm like I should be better than that. I'm like whatever it is, right? So मेरे लिए जो criteria था वो ये, like I used to tell this to my students, if they listen to the podcast will relate to these words that I said. मैं कहता था your criteria is कि you don't embarrass me in front of my peers and my professor, right? Like if I go to them, I can look them in the eye and say, "यार हम वैसे ही publish करें जैसे आप लोग करें," and I'm not absolutely embarrassed being in front of them. So that was I was always striving for that as the yardstick, and I knew whatever HEC's criteria was would get satisfied over there. So मुझे नहीं पता कि अभी क्या criteria है, but I do know कि जो है that system, they were trying to do the right thing. मैं ये बिल्कुल criticize नहीं करूँगा, HEC गलत कर रहा था. HEC वो कोर रैंकिंग को लेके उन्होंने कहा जी एक बार होनी चाहिए, इस तरह के लोग उसको निकाल रहे हैं सिस्टम, वो कोई जीवो गरीब के जर्नलिस्ट का इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा था, वो ठीक है. People will always bypass the process, but I don't think they were trying to do something fundamentally कोई गलत थी उनकी क्वालिटी की बार एस्टैब्लिश करना. तो मुझे नहीं पता कि अब क्या है, इसलिए आई कांट कमेंट कि वो क्या रहा है. मुझे ये पता है कि ग्रेजुएट्स की क्वालिटी कम से कम ही होती जा रही है ओवर द इयर्स. ये आप बात करें, मतलब ये अगेन मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई आप प्रॉपर पीयर रिव्यू स्टडी भी शायद हो जानी चाहिए, ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर पब्लिकेशन हियर. लेकिन एनेक्डोटली ये चीज हमें इतनी दफा कुछ ऑब्जर्व भी किया और सुनी भी है कि वहां से इसको अब प्रॉब्ली आप कंप्लीटली देयर इज समथिंग देयर सर्टेनली. अच्छा, एक मैं सॉरी मैं उसी पॉइंट पे हम वी कैन आई थिंक कैन अबाउट टू गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. लेकिन एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोट की है, और आई जस्ट वांटेड टू हियर योर थॉट्स ऑन दिस. मैं खुद उस ट्रैक पे एम्प्लॉयड हूँ यहाँ पे. इट्स कॉल्ड द लर्निंग टीचिंग एंड स्कॉलरशिप ट्रैक. सो देयर इज द स्टैंडर्ड as we call it here in Glasgow, the research and teaching track, जिसमें आपकी promotion वाला is dependent quite a bit on how much money you are bringing in, how much आपकी publication impact factor, all of that. थोड़ा सा और मेरे ख्याल से slightly more sensible and adaptable than Pakistani system, जो कि बहुत ही bureaucratic है मेरे ख्याल से. लेकिन nevertheless same focus जो दुनिया भर में है. लेकिन what they have done here in Glasgow और बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसा ऐसा हो रहा है कि alternate track where your promotion going all the way to professor and everything is on the learning, teaching and scholarship track as it's called, जिसमें आप primarily employed as a teacher हैं, आपका focus teaching के ऊपर है. उसमें भी थोड़ा सा push होता है जो scholarship की term है, that covers writing and publication around teaching. So वो you can't get rid of that entirely. लेकिन if you design new courses or you do something innovative in a course you teach, that counts. That is what they want to see, and you obviously show some evidence of that. तो क्या आपको लगता है this seemed like something जो कि मैंने पाकिस्तान में बिल्कुल ही नहीं देखी और यहाँ पे भी बहुत कॉमन नहीं है, to be honest. हमारी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा is kind of leading in this area. तो do you think something along these lines would be useful पाकिस्तान में, ताकि undergrad के ऊपर refocus हो चीजें थोड़ी सी? I think so. It seems like a very unique idea, and I would love for AGC to adopt something like that. And brings. I think it's a brilliant idea, and coming back to it, like like वो जो मैं पहले बात कर रहा था कि you can't suck at both things, I mean वो मैं अपने यहाँ पर भी अपनी जॉब पे भी लोगों को कहता हूँ I'll take arrogance or incompetence, but one at a time. So I'll take you sucking at research if you're great at teaching. I'll take you sucking at teaching if you're great at research, but you can't suck at both. And our dilemma is that people suck at both and the system doesn't weed them out. True. ये नमल में हमने फॉर इंस्टेंस अप्रेजल में ना ये रिसर्च एंड स्कॉलरशिप के पूरे पैराडाइम को समहाउ पाकिस्तान ने पब्लिकेशंस के ऊपर रिड्यूस कर दिया. तो वो हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया कि जो स्कॉलरली आउटलुक है बंदे की, तो वो स्कॉलरशिप इज अ बिगर फिनोमेना. मतलब बंदा स्कॉलरली है कि नहीं, तो वो उसकी टीचिंग में भी किसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ना. एक स्कॉलर आदमी क्लास में बिल्कुल फारिग तो नहीं खड़ा होगा ना. तो हमने उसको एक्सपैंड किया. उसमें इवन हमने ये स्पिन ऑफ्स यानी कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिन ऑफ्स को भी डाला है. वो भी उसका एक स्कॉलरली आउटकम होगा, तो वो फिर रिफ्लेक्ट होगा उसमें. इवन FYPs उसकी अपनी डोमेन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हैं और वो किस नेचर के हैं. तो हमने इसको एक्सपैंड किया एंड आई थिंक इट हैज हेल्प्ड. लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए कि यस अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स काउंट एज वेल, क्योंकि इवेंचुअली वो उसकी स्कॉलरली प्रोफाइल को बिल्ड कर रही है ना चीज़ें.
एक ही दिन में बंदा स्कॉलर तो नहीं बन जाता, तो जरा लॉन्ग टर्म व्यू लाने की कोशिश की अप्रेजल में। अल्लाह करे हम इसको प्रमोशन में भी पुश करने में कामयाब हो जाए, तो वो फिर जरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा हमें लगता है हमारा ट्रैक। Makes a lot of sense. आप देखें इवन यूएस के अंदर कई लोग जो कि actually they were really good researchers as well. Eric Mazur and Joe Howard में, I'm like, he was like one of the best physicists. I'm like, everybody loved him, but he was one of the best teachers as well. Just imagine the impact that one person's had. कि जो Coursera है वो inspired by his teaching methodologies थी. I think there are like the whole teaching landscape changed because of the scholastic theories that he came up with, and then he tested them in his classrooms. Peer learning का जो concept है, active learning का concept है, I mean, like he's tried all of those out and he's published on them. He doesn't publish in physics anymore. He actually publishes in educational research journals, और उसको neuroscience से कैसे आप connect कर सकते हैं. I think that definitely requires a change in the university's mindset कि वो ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें, अपने फैकल्टीज को एनकरेज करें कि ऐसे इनिशिएटिव्स पे काम करें। स्पेशली अब पोस्ट कोविड क्योंकि लैंडस्केप चेंज हो रहा है, आई थिंक तो एक्सपेरिमेंट भी वाइड स्केल हो गया कि देयर आर अदर फॉर्म्स एज वेल, क्लासरूम से आउटसाइड भी रीच हो सकती है ना, एक्सेस हो सकती है स्कॉलर की या टीचर की। डॉक्टर जी, आपने जिक्र किया था कि आपकी होप जो है ना वो एजुकेशनल स्टार्टअप्स से है, जो अदर देन यूनिवर्सिटी कुछ वेंचर्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे थे आपने भी कुछ स्टार्ट भी किया इस तरह का, तो जरा उनके बारे में जो स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ हो रहे हैं थोड़ा सा जरा बताएंगे कि क्या उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और स्पेशली आपके स्टार्टअप का। नहीं, मेरा अपना तो कोई स्टार्टअप नहीं है स्पेस के अंदर. आई एम हेल्पिंग मल्टीपल स्टार्टअप्स बिकम सक्सेसफुल इन दिस. मेरा आई एम डूइंग अ स्टार्टअप बट इट्स अ टेक्नोलॉजी SaaS service, like very boring. So मेरा startup does something completely different. लेकिन multiple startups हैं जिनको I advise them and I've helped them raise money. I've helped them become financially viable. तो उसमें multiple तरह के हैं, कोई elementary school और secondary schools के ऊपर focused हैं, कुछ जो हैं वो post graduation के बाद जो है employability के ऊपर focused हैं. So in multiple programs, I'm trying to do whatever I can in my capacity, and it's somebody who's listening to this who are in the EdTech sector. I'm like, feel free to send me an email, and I'm happy to help you, connect you to just help advise you or mentor you on how to do it, or help connect you to funding. So that's what I have to offer. तो वो multiple हैं और वो multiple different चीजें कर रही हैं. अच्छा, इससे पहले नमान ने एक सवाल किया था, आई थिंक वो आंसर हुआ है या मुझे नहीं पता, कि वो जो आपकी हम हिस्टोरिकल जर्नी ही कवर कर रहे थे बीच में, फिर ऑफ कोर्स ये तो बात भी है कि आपका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम ऑलमोस्ट आई वुड से रॉक स्टार इन एकेडेमिया से इंडस्ट्री, एंड यू आर डूइंग ग्रेट ओवर देयर टू ऑफ कोर्स, तो वो ट्रांजिशन ऐसा तो नहीं होगा वन फाइन डे आप यू वोक अप एंड आपने कहा ओह ये लेट्स स्टॉप दिस एंड लेट्स स्टार्ट दैट, तो वो भी कोई बिट्स एंड पीसेस में कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए होंगे अलोंग द वे, तो वो उसकी वजह क्या थी कि आप आउटसाइड एकेडेमिया क्यों यू स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग एंड इवेंचुअली आप उसी तरफ चले गए, वो थोड़ी सी डिटेल अगर आप ऐड कर सकें. Actually, I never wanted to leave academia. I'm like, यानी कि आपने कहाँ से, हाँ, तो वही मैंने आपको बताया था कि मैंने अबाउट थर्ड ईयर एट NUST मैंने जो है ना सिलिकॉन वैली की कुछ कंपनीज के लिए कंसल्ट करना शुरू किया. सो आई टॉक टू अ फ्यू पीपल और उनके कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के प्रॉब्लम्स थे. आई पब्लिश्ड इनफ, आई हैड इनफ फंडिंग, तो मेरे लिए जो है ना उस वक्त फंडिंग और पब्लिकेशन वाजंट द ऑब्जेक्टिव. तो उसमें जब वो दैट वाज वेरी फुलफिलिंग. You're actually building something that goes into production that people use and then getting feedback around that and improving those systems was very fulfilling. So that was another 2 years. I'm like, इस तरह से नहीं था कि उसके बाद अचानक अब ये नहीं करना है. लेकिन I knew कि I was unhappy with the research in terms of, you know, मुझे नहीं लगता था कि इसको मैं twice कर दूँ अपनी research throughput को, so that's going to have a meaningful impact. I was really thinking कि यार if I can employ hundreds of people, that'll probably have a much bigger impact than what I'm having right now. So वो thoughts थी, बट कोई clear path नहीं था. Path मिला जब उन companies के साथ मैंने काम करना शुरू किया and multiple projects वगैरह deliver किए, तो उसके अंदर
that's how I figured it out. Dr Arshad थे उस वक्त, he was very supportive. Ashok Malani, he's from Hyderabad, Pakistan. So Ashok was an inspirational person जिन्होंने connected me to Silicon Valley और open doors, जिसकी वजह से जो है ना फिर वो मुझे at least exposure मिला to go work on those things. So yeah, it wasn't a overnight decision. It was a couple of years long decision. I knew I wanted something different, but I didn't know what it was. So it took a little bit of time to figure that out. Right. So I think Vicar, अगर gear shift करें अब from gear shift करें academia to industry का इनका especially Amazon. हाँ तो हाँ डॉक्टर तो actually अगर हम लोग we come back to like the question that started this off. So that question still is remain unanswered in its entirety. कि आप professional journey बता रहे थे. So you were at the point where you talked about your NUST to industry transition. तो वहीं से दोबारा खास ये सिरा पकड़ते हैं और आगे चलें. So if you just talk us through the rest of your professional journey since your transition from NUST to the industry. Yeah, I'll try to keep this one short. I think the questions we wanted to ask were coming up organically, so we just went with it. And I think why not? No, that makes sense. मतलब ज़्यादा मेरे ख्याल में academics के लिए ही ये podcast है, so I think it probably makes sense to go deeper into the weeds of that. When NUST छोड़ा, I did a startup. उस startup ने वो basically Santa Clara यहाँ पर US based थी, पीछे उसकी engineering team इस्लामाबाद में थी. उसकी जो team थी उसको acquire कर लिया about 1 year later by another startup in Silicon Valley. Worked with that startup for 5.5, 6 years. I was person number 2 after the founders startup in the engineering की side पर. And eventually that startup, फिर उसके बाद मुझे दरमियान में वापस move करना पड़ गया आप लोगों को. You guys know exactly what I had a personal constraint जिसकी वजह से मैं इस्लामाबाद में नहीं रह सकता था. And that eventually हम लाहौर में कुछ अर्सा रहे. फिर we actually just decided that we come back to the US. So उसमें I was a director of engineering, senior director. Then it got acquired by VMware. और उस वक्त तकरीबन 70% इंजीनियरिंग जो थी वो मुझे रिपोर्ट करती थी उस स्टार्टअप के अंदर. फिर VMware में मैं बहुत अर्ली एक नया बिजनेस ग्रुप बन रहा था, बिजनेस यूनिट ऑन क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग. तो उसमें आई वाज अ डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग. फिर उस टीम को बनाया फ्रॉम स्क्रैच इन पालो आल्टो एंड बेलव्यू के अंदर. उसके बाद आई केम टू AWS में भी ऑल्सो वाज एन इंटरेस्टिंग चैलेंज क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज जो है बन चुकी थी नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर. तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था उस वक्त. तो वो बेसिकली वो बनाए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के सोल्यूशन के जितना भी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है उसके लिए. फिर नेटवर्क में विजिबिलिटी की काफ़ी सारी सर्विसेज बनाई. और फाइनली I was doing, in addition to the things that I mentioned, मैं also उसके अलावा जो है एक public facing service थी जिसका आइडिया मैंने खुद लेके आया. मैंने कन्विंस किया लीडरशिप को और as a GM मैं उसको लॉन्च कर रहा था. But then एक और अपॉर्चुनिटी थी, एक चीज़ जिसके बारे में काफ़ी अर्से सोच रहा था कुछ लोगों के साथ. That became very real कि मुझे लगा कि उसमें जो है ना there is a fleeting जो ना एक अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर. तो फिर मैंने AWS छोड़ दी कुछ अर्सा पहले. कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी. एंड उसके बाद अब जो है मैं उस स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहा हूँ टू किक इट ऑफ, बिल्ड इट अप. अच्छा, तो अब this time I'm guessing not as an engineering lead या मतलब CEO, CTO इस टाइप की. जी इस दफ़ा फाउंडर चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हूँ. तो सारी इंजीनियरिंग और सारी प्रोडक्ट की टीम है वो मेरे पास है. Good luck with that. Thank you. अच्छा, तो जिस तरह जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स हैं, इवन जो सॉफ्टवेयर हाउसेस ट्रेडिशनल भी हैं, जो उनका प्रोडक्ट भी होता है उसका स्केल भी वर्सेस अब आपने अमेज़न में जो आपका लास्ट डेजिग्नेशन थी, तो उसमें जो स्केल्स ऑपरेशंस का भी या जो नंबर ऑफ टीम की जो स्केल है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनका भी स्केल, तो एवरीथिंग इज एट स्केल. लेकिन पाकिस्तान में कोई सॉफ्टवेयर हाउस और कोई स्टार्टअप भी वो स्केल नहीं हो पाता इतना. इंडिया में फॉर इंस्टेंस देयर आर सॉफ्टवेयर हाउस जो बहुत ही ह्यूज है. इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में स्केल नहीं हो पाती चीज़ें? तो हम ये यूनिवर्सिटी से तो डिसअपॉइंटेड हैं, हम सारी हैं वो, हमने उनको काफ़ी एक्सप्लोर भी कर लिया. तो यहाँ पे भी कुछ समथिंग इज एट वर्क, यू थिंक?
मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान बहुत पीछे, आई थिंक वी आर जस्ट बिहाइंड। हम इंडिया से कंपेयर करते हैं, ये ऐसे ही था कि नस्ट में कई दफ़ा जो है ना वो जो उनके लीडरशिप थी वो सिलिकॉन वैली आते थे तो वो वापस आए कहते थे कि हमें नस्ट को स्टैनफोर्ड बनाना चाहिए, इस्लामाबाद को सिलिकॉन वैली बना देना चाहिए। सो कभी कभी हम कंपैरिजन जब करते हैं तो आई थिंक वी मेक अ स्लाइटली अनफेयर कंपैरिजन, क्योंकि इंडिया से बहुत आगे है यानी कि थोड़ा बहुत आगे है, वे अहेड ऑफ अस। सो वी हैव एट लीस्ट 2 decades ऑफ कैचिंग अप टू डू। तो मेरे ख्याल में we used to have discussion 5-6 साल 7 साल पहले कि भाई $1 billion स्टार्टअप पाकिस्तान से बनेगी। ऑलरेडी $1 billion मल्टीपल वैल्यूएशंस आनी शुरू हो गई हैं जो कि $1 billion स्टार्टअप्स पाकिस्तान के अंदर बन चुकी हैं। कुछ तो एक्विजिशन है जो कि ठीक है, करीम वगैरह तो पाकिस्तान की कंपनी नहीं थी, बट जस्ट कंपनीज दैट आर बिल्ट फॉर पाकिस्तान एंड सो फोर्थ। तो मेरे ख्याल में हमारे पास स्केल आएगा और बोथ इन टर्म्स ऑफ पीपल एज वेल एज टेक्नोलॉजी जो है वो स्केल आएगा। And that is just there's natural transition and it's certain level of ecosystem building जिसके around होनी जरूरी है। For example, venture capital का concept exist नहीं करता। जब मैं पाकिस्तान में था तो ऐसा कोई concept exist नहीं करता था। इस साल I think gonna probably hit $1 billion in venture capital being invested into Pakistan। मैं revenues की बात नहीं कर रहा, मैं ऑडिशन की बात नहीं कर रहा, this is just venture capital। जो software industry है, export है, I think that's gonna hit 5 billion as well। अब हम उसमें कुछ हम बुक कीपिंग करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। आई नो हैविंग रन सॉफ्टवेयर कंपनीज इन पाकिस्तान, मुझे पता है कि लोग एम्प्लॉय, अब तो जो सबसे बड़ा हमारा जो कंपटीशन है वो लोकल इंडस्ट्री तो है ही, बट पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय यूरोपियन companies and American companies. So I think that is another pretty big stiff competition, which is great for the industry. And to be honest, अगर मैं इन्फ्लेशन वो सारी चीजें साथ हैं उसके, लेकिन if I compare कि जो अभी मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ पाकिस्तान में, if I were to hire the exact same people with the same experience 10 years back, their salary would be at least 7 times lower or 6 times lower. So Pakistan में now it's like in software industry almost I'll be honest with you, मैं बर्लिन में एक साइट बनाने को सोच रहा था, मुझे बर्लिन में थोड़े cheaper पड़े थे versus Pakistan. So this is great for the industry. So I think we are just on that path. It's a path. You've got to have the right ecosystem and the right catalyst around it. I think वो catalyst अब generate होना शुरू हो गया है, venture capital available है, human capital हमारे पास हमेशा से था। एक universities हैं जो हैं वो basically they are people who are successful in spite of the universities, not because of them. So वो आपको मिल जाते हैं top talent. One thing that is going in our favor is के जो है स्टार्टअप्स को जो पाकिस्तान के अंदर है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, दे डोंट हैव टू कम्पीट विद एन अमेज़न और फेसबुक और गूगल जो कि बाकी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, देन ऑल द टॉप टैलेंट गोज ओवर देयर, तो दे कैन एक्चुअली दे हैव अ चांस एट हायरिंग द टॉप टैलेंट एज वेल। सो आई थिंक ऑल ऑफ दोज आर गुड थिंग्स एंड मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिस इज जस्ट टाइमिंग, जिस तरह से एक्सेलरेट हुआ है वो ecosystem सारा, I just think it's a matter of time that it becomes a fully blossomed thing and you'll see the scale in revenue as well as people employment that you are referring to. ये कनेक्ट करता है उसी, आई थिंक जो उसी तरफ जा रहा था। आई थिंक हमने पार्टी एड्रेस कर ही लिया है कि अगर हम अगले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान में इस तरह का नेक्स्ट बिग थिंग देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली वन ऑफ मैनी होपफुली, तो कैन यू वर्क बैक फ्रॉम दैट एंड सी व्हाट यू वांट टू डू, स्टार्ट डूइंग टुडे। एंड इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली कि कुछ चीजें आपके ख्याल से ऑलरेडी उस स्पेस में हो रही हैं, इट्स काइंड ऑफ अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज़ मैटर ऑफ टाइम विद टाइम थिंग गेट रिजॉल्व। जब आपका वेक्टर का डायरेक्शन सही तरफ हो ना, तो वो चीज इन सर्टेन स्पेस तो लग रहा है कि ठीक तरफ है। लेकिन अगर इफ आई काइंड ऑफ अगेन पुल यू बैक टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, कि विद टाइम अगर चीजें ठीक हो जाएंगी, क्या हायर एजुकेशन का वेक्टर हिसाब से ठीक अभी है? आई थिंक आई काइंड ऑफ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट क्वेश्चन ऑलरेडी, लेकिन वी मेक इट बिट मोर स्पेसिफिक कि अच्छा आज से एनी नंबर, यू नंबर कोई भी लगा दे, 15-20 साल वट एवर टाइम के बाद पाकिस्तान में एक इस किस्म की एक या मल्टीपल कंपनी का इकोसिस्टम बन जाना चाहिए। हायर एजुकेशन का वेक्टर उस हिसाब से अलाइन अगर नहीं है, जो कि हमें लग रहा है कि हमारी डिस्कशन कि नहीं है, तो क्या चेंजेस होने चाहिए हैं कि आवर हायर एजुकेशन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पीपल सो दैट यू नो द स्टूडेंट्स प्रोड्यूस give this output, get this quality because of the universities rather than in spite of them, like you were saying. Vector is wrong. Higher education का right now. The bigger thing, मैं by the way vector उसका भी मेरे ख्याल में venture capital का भी wrong है। क्योंकि people know untapped market and they're throwing money in there. Many of those businesses are not financially sound.
So मेरे ख्याल में vector वहाँ पे भी right है, but there is a huge incentive to fix the vector. That is a self-correcting vector. ये नहीं है कि आप उसमें throw करते जाएंगे money and yeah. So that will self-correct simply because it must self-correct for the people who are investing money, right? I mean, like तो वो तो एक self-correcting process है जैसे दुनिया में जनरली होते हैं. Higher education में unfortunately they don't need to do anything. I mean, like, there's no incentive to make it better क्योंकि वो लोगों ने फिर भी यूनिवर्सिटी में तो भेजना ही है अपने बच्चों को. And there's a huge population, there's a huge young population. They'll end up in universities. They have no incentive to make them any better as long as they can keep increasing enrollment. So vector off है. लेकिन और incentive नहीं है to fix it as well. Now how they could potentially fix it? मैंने कुछ higher education में बात की, कुछ basic चीजें थी, you can change it to bring that in. कुछ मैंने faculty के बारे में बात की कि like you can suck at one, but preferably don't suck at any, but you suck at one, but don't suck at both. लेकिन और इसके अलावा जो मेरी tangible advice है वो मैं तो faculty को कहूँगा कि वो industry के साथ काम करना शुरू करें. Like I think we just get falling behind कि दुनिया में चल क्या रहा है. यहाँ पर मतलब मेरी टीम के अंदर like जो एक बंदा जो एक प्रोफेसर था यूएससी का, वो मेरे लिए काम कर रहा, आगे उसने काम किया and मैं उसके साथ PhD करना चाहता था. Back in the day, he's so old and so accomplished in his life. लेकिन वो भी आया और उससे भी लर्न करना था. एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. में जाते हुए क्या गया कभी पता भी नहीं चलता, तो मैं अथॉरिटी हूँ उस सब्जेक्ट का दुनिया भर में, बट मुझे ये नजर भी ना आता ना ये स्केल ना ये प्रॉब्लम्स अगर मैं यहाँ पे टाइम लगा के जाता. सो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में टाइम लगाना फैकल्टी मेंबर्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है. तो दैट्स ऑन द फैकल्टी मेंबर्स के वो अगर उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें, थोड़ा इंडस्ट्री के साथ थोड़ा टाइम लगाएं. एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज I think they need to start really performance managing. Like अभी तक जो है ना यूनिवर्सिटी में performance management का culture नहीं है कि really कौन से अच्छे लोग हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं. जो नहीं है अच्छे उनकी जगह और लोगों को लेके हैं. Better to hire masters people or people from the industry rather than hiring PhDs who are not good at neither research nor teaching. उसमें मेरे ख्याल में एक और भी एस्पेक्ट यूनिवर्सिटी कर सकती है कि जब they find some good people. मैंने जो fundamental problem देखे जब मैं अंडरग्रेड कर रहा था उसमें भी यही था. उसके बाद मैंने जब मैं वहां पर था तभी मैंने देखा और उसके बाद भी कंटिन्यूअसली सी इट कि they can't hold on to their best people either. So LUMS is a slight exception, but उसके अलावा मैंने किसी को भी देखा जो कि अपने अच्छे लोगों को नंबर में आप काफी सारे लोग अब नंबर में नहीं है, but you were all there when I went there and they always inspired me the kind of talent I would interact with और जिनके साथ मैं discussions करता था. Always like fundamentally deep discussion from people who really cared, you know, and who were really good at their job. और ये मैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में देखता था, बट नन ऑफ दोस पीपल और वेरी फ्यू ऑफ दोस पीपल आर स्टिल इन दोस इंस्टीट्यूशंस. सो यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम ये कि दे नॉट इवन एबल टू होल्ड ऑन टू दोस पीपल. एंड आई थिंक उनका जो माइंडसेट वो बन गया हुआ है कि यार ये बंदा गया तो कोई और, ये भी PhD है ना, ये भी डॉक्टर साहब है, वो भी डॉक्टर साहब है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है. सो I think that is where the universities could do better. Performance manage the bad ones out. When you find a good one, don't let them leave. Find a way. उनका salary structure ठीक नहीं है या कुछ भी है, like find whatever you need to do. उनको ज़्यादा flexibility आपने provide करनी है, आपने उनको allow करने को जाके कहीं पर time लगा सकें किसी और जगह पर regularly, ताकि वो अपने आप को continuously abreast रखें जो latest changes हैं research में या teaching में. So university needs to make whatever provision necessary to keep these people on their teaching staff. So वहाँ पर universities could do a little bit better. Everybody could do something differently. But वो करेंगे कि नहीं, I don't see an incentive for them to fix it. I think everyone needs to bring something to the table. जिस तरह आपने कहा either teaching में या research में या किसी भी dimension में. एक चीज़ which I wanted to ask you, since अब आप एक industry में leadership position पे भी रहे हैं, right? GM वाली position पे, तो which means कि आप hiring decisions में भी involve रहे होंगे, आपने team building भी की है. तो जो एक अच्छा ग्रेजुएट ऑफ पाकिस्तान जो बेस्ट जगहों से FAST, GK, LUMS, NUST टाइप जगहों से कंप्यूटिंग की बात हो रही है, और वर्सेस एक इसी तरह का अच्छा ग्रेजुएट फ्रॉम द बेस्ट प्लेसेस फ्रॉम US लेट्स से, तो कोई अगर कंपैरिजन लेट्स से टेक्निकल कॉम्पिटेंसी में है भी, तो बट क्या कोई ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि देयर आर अमिस in Pakistani graduate, you think? Yeah, I've been fortunate कि मैंने teams सिर्फ यहाँ पर US में, पाकिस्तान में नहीं, multiple geographies around the world में बनाई हैं. मैंने आयरलैंड में बनाई है,
रोमानिया में एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरा आई बीन फॉर्चुनेट कि मैंने मल्टीपल जगहों पर मुझे एक्सपोजर मिला है डिफरेंट तरह के लोगों से, डिफरेंट तरह के कल्चर से डील करने का भी। तो मुझे डिफरेंस नजर आता है वो ये है कि अंडर ग्रेजुएट को आप इसलिए नहीं हायर करते जनरली कि उसको बहुत कुछ आता होता है, उसको आप फाउंडेशंस उसकी स्ट्रांग है उसके ऊपर हायर करते हैं। और हमारे स्टूडेंट्स की फाउंडेशंस वीक होती हैं, हमारे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल काफी हाई होता है। तो वही बंदा अगर आ जाए, वो कोई लड़का या लड़की अगर अमेरिका में आ जाए और वो एक दे एंड ऑफ स्पेंडिंग लाइक अ ईयर इन अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, they are absolutely hireable. Not only hireable, they come and they crush it inside of any big organization, Amazon, Google, and so forth. And many of us have experienced it as well. हम आते हैं तो हमें थोड़ा सा we are behind, but we catch up very quickly. So मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि वही फाउंडेशंस अगर उनको वहां पर ठीक तरह से प्रोवाइड की कर दी जाती तो they would have been just as good, if not better, or way better than other people जो कि ग्रेजुएट कर रहे हैं। लेकिन वो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। और मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो इसीलिए शायद नहीं प्रोवाइड करे, कुछ प्रोफेसर अच्छे नहीं है, बाकी जो प्रोफेसर अच्छे हैं वो अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जो फाउंडेशंस में भी चेंजेस आ रही हैं। तो यू हैव टू, अगर आपने उनको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी पढ़ाने हैं ना, तो आपने डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाने हैं ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके बंदा। तो हम अभी भी जो सी में इंग्लिश पढ़ा के जो ना वो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, राइट, लाइक तो वो बेसिकली उसको भी अगर ठीक तरीके से पढ़ा देंगे, अगर थ्योरी ऑफ एल्गोरिथम्स को भी ठीक तरीके से पढ़ा देंगे, सो दीस पीपल बिकम एम्प्लॉयबल वेरी क्विकली। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को, बेसिक कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम्स को अगर आप ठीक तरीके से पढ़ा दें, एक बेसिक ग्राफ थ्योरी को ठीक तरीके से पढ़ा दें, दीस पीपल विल बिकम एम्प्लॉयबल। लेकिन अभी आउट ऑफ द गेट दे आर नॉट, बट ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट विदाउट फेल इफ दे एंड अप इन द यूएस या यूके में, तो वो इमीडिएटली जो है 1 साल के बाद दे आर अ डिफरेंट पर्सन। तो ये आप लोग फॉर इंस्टेंस स्किप क्यू यानी इसी स्पेस को कवर करने के लिए है ना, इसी गैप को कि वो एम्प्लॉयबिलिटी one of the startups that I'm basically advising and helping boot up is SkipQ. SkipQ ही करता है, they take grads and they make them employable. 6 weeks to make you teach you, or 5 weeks to teach you what your university didn't teach you in 5 years, right? So alhamdulillah they're doing well. I'm like there are challenges, but yeah, it's a good challenge. I mean, like, so that's what they're doing. I'm very excited about that space and that company, and I really hope that they go places. यानी आप लोग you're taking those same fundamental courses जो कि कंप्यूटर साइंस में everyone knows, फिंगर टिप्स पे गिने जा सकते हैं, 4-5 कोर्सेज हैं, लेकिन आप उनको एम्प्लॉयबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ टॉपिक्स मतलब रिकवर करते हैं। यार मैं तो नहीं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बट आई एडवाइज देम ऑन द करिकुलम। तो वो करिकुलम ये है कि इट्स अ वेरी हैंड्स ऑन करिकुलम। उसमें एक प्रोजेक्ट है जो वो करते हैं, एंड दैट प्रोजेक्ट बिल्ड्स वीक ओवर वीक, और वो जो कर रहे होते हैं वो भी स्प्रिंट्स और बेसिकली स्क्रम स्टाइल में, जो एजाइल स्टाइल है उसके अंदर उस प्रोजेक्ट को करते हैं। हर वीक डेमो होता है एंड दे कीप बिल्डिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो 5-6 वीक्स के अंदर इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट, लाइक जो उन्होंने किया होता है, जो एक्चुअली अपने हाथ से कोड लिख के किया होता है। दैट्स द डिफरेंस कि नाउ दे नो समथिंग where they not even heard these terminologies before university में 5 साल में उनको नाम भी किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उसके उनके प्रोफेसर को भी नाम नहीं पता था। तो they basically cover that gap as the same person, but in 5 to 6 weeks they are a different person simply because they have touched 10 to 12 different very unique AWS services. उनको उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कनेक्ट करके एक रियल वर्ल्ड यूज केस सॉल्व कर लिया होता है। उन्होंने मैट्रिक्स और अलार्मिंग उसके बाद बनाई होती है। दे नो हाउ टू ऑपरेशनलाइज दैट कोड। स्प्रिंट स्टाइल में क्या होता है, टिकट कैसे ओपन होते हैं, टिकट मैनेज कैसे होता है, स्प्रिंट कैसे चलती है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स दैट वी आर नॉट टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी में। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं जिस माने में पढ़ रहा था तो वही पढ़ाए जा रहे थे, वो पता नहीं क्या पढ़ाते थे। आई डोंट इवन नो व्हाट दैट इज, नथिंग टू डू विद रियलिटी, राइट? सो तो दैट्स व्हाट इट इज। रेलेवेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो they're writing code, they're spending those students जो किसी ग्रेजुएट हो रहे हैं, they are spending, कुछ से मैं मिलता हूँ तो कहते हैं कि हमें 14 hours a day कोड करना पड़ता है to get through that program. That includes weekend. वो एक लड़का वो कहता है कि मैंने जो है ना 2 महीने बाल नहीं कटवाने जा सका मैं, because टाइम ही नहीं था बाल कटवाने का। So but yeah, that's what's needed. It's not a very big difference, but people who know what needs to be taught can teach that. You can't just come out of that curriculum from thin air, right? ये आपको बना बनाया कहीं पर नहीं मिलेगा। So do you think कि क्योंकि 5 weeks का प्रोग्राम है तो of course बड़ा वो cramped होगा, लेकिन तो of course यूनिवर्सिटीज के पास तो 5 weeks से बहुत ज़्यादा टाइम है to cover the same ground, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। एंड उसकी रीज़न आपको यही लगती है कि वो क्योंकि इंडस्ट्री से कोई
इंटरेस्ट ही नहीं है लिंकेज होने का फैकल्टी का, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एल्गोरिदम या जो भी कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो बुकिश टाइप होके खत्म हो जाते हैं। That is the problem. They can't even spell the words जो कि इन लोगों को 5 हफ्ते बाद आते होते हैं. They don't not only that they don't know what they are, even when we tell them they probably can't spell them so properly. So इतना बड़ा डिस्कनेक्ट हो चुका है from the industry, what the industry needs. देखिए इसमें एक पर्सपेक्टिव ये किसी और से डिस्कशन में निकला था कि किसी इंडस्ट्री से ही बात हो रही थी कि स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज कहते वी कैन टेक केयर ऑफ देम, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी ये हो रहा है कि जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके पास फाउंडेशंस भी नहीं होते या ही नहीं होते। कहते हैं एटलीस्ट आप वो करें, यूनिवर्सिटी फाउंडेशन पे फोकस करें तो द रेस्ट इंडस्ट्री कैन कवर बाय फॉर एग्जांपल आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है, आपका ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग है, उसमें आप कवर कर सकते हैं। सो डज दैट रेजोनेट विद योर व्यू या योर ऑब्जर्वेशन के यूनिवर्सिटी अगर कम से कम जो फाउंडेशनल चीजें हैं वही एक क्वालिटी के ऊपर डिलीवर हो जाए तो दे वुड हैव done their bit? या do you think it's also important कि यूनिवर्सिटी जो है वो in sync रहे with the industry to a certain extent ताकि वो they are more job ready when they graduate? Is this like a contrasting way of looking at things या do you think ये कुछ साथ साथ चीजें चल सकती हैं? मेरे ख्याल में चल सकती है अगर फाउंडेशन ठीक पढ़ा दें तो the people would still be useful. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 साल में फाउंडेशन ठीक पढ़ के नहीं आते हैं and then there's a lot of unlearning that needs to be done और वो फिर on the job हमने वो पुश कर दिया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री को। और मैं भी इसी तरह होता जब मैं कहता है इंडस्ट्री कुछ नहीं करती, what have they done for academia, right? And it was much later when I actually moved to the industry that I realized that it's not their job to help us do our job as academics, right? They do it because it's a need. जब आ जाते हैं लोग कोई पास कर लिया किसी ने बाहर तो उसको वो कर लेंगे because it's an investment on their side, right? Like so तो मेरे ख्याल में फाउंडेशंस भी ठीक हो जाए तो बहुत this is a night and day difference. अगर आप उसपे थोड़ा सा भी if you can do some seasoning of something that is relevant, some relevant project in machine learning, some relevant project in cloud or something, right? Virtualization वो अगर हो जाए तो उससे तो there'll be just like icing on that cake. लेकिन हाँ वाकई I agree with you कि अगर फाउंडेशन भी ठीक पढ़ा दें तो I think most of them will become employable. एक जिस तरह अभी इंडस्ट्री की में आप बता रहे हैं, आपने ये क्यू का स्टार्टअप है या बाकी स्टार्टअप हैं कुछ और भी जो ये काम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट अंडरग्रेड करके आ रहा है उसकी शॉर्टकमिंग्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने राइटली आइडेंटिफाई भी किया कि फैकल्टी को आउटरीच करना चाहिए, इंडस्ट्री को भी ना। अब जो मुझे एक यहाँ पे चीज़ मिसिंग लगती है वो ये कि फॉर एग्जांपल एक यंग पीएचडी फैकल्टी मेंबर आया पाकिस्तान में, उसने कोई 22 से पाकिस्तान से कहीं से पीएचडी करके आया और उसने आके कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। इधर फॉर एग्जांपल यूके में अब ये सिस्टम है एक मेंटरशिप वाला ना कि आप अगर नए एम्प्लॉई हैं तो दे विल असाइन यू अ मेंटर जो आपको फिर आपके कैरियर प्रोग्रेशन में हेल्प कर सकता है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की साइड पे ये मेंटरशिप वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही मिसिंग है, क्योंकि पहले के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो तो बिल्कुल ही इंडस्ट्री के साथ उन्होंने लिंक नहीं किया है, बहुत ही रेयर हैं जो केसेस हैं या कंसल्टेंसी में या बाकी जो भी चीज़ें। तो इस गैप को कोई कवर करने का आइडिया है कि हम यूनिवर्सिटी अगर कोई करना भी चाहती है फॉर एग्जांपल तो वो ये मेंटरशिप कैसे प्रोवाइड कर सकती है अपने फैकल्टी मेंबर्स को, जिससे वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे भी काम करना शुरू करें, रिसर्च भी उनके साथ मिलकर करना शुरू करें, अपने इवन कोर्स कंटेंट जो है उसको लिंक करना शुरू करें जिस तरह की इंडस्ट्री के आप बता रहे हैं और ये डिमांड्स पर हैं। तो एनी आइडियाज कि ये मेंटरशिप वाला सिस्टम कैसे क्रिएट किया जा सकता है या यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए इस पे कैसे? हमें ख्याल में they need to tap into, they've lost a lot of universities have lost a lot of really good people to industry already, but वो लोग हैं जो कि वाकई they care, like they really want to make the education system better as well, but they realized that they could not, so they and the money wasn't there, so they actually moved to the industry, right? मेरे सामने कितने लोग हैं very successful in the industry, खालिद लतीफ है, अफान है, many others, right? मतलब जो जिन्होंने यूनिवर्सिटीज छोड़ के आप इंडस्ट्री को ज्वाइन किया simply because they felt कि वहाँ पर वो they'll create a bigger impact, make more money, as well as they're not really making a big difference in the universities. तो उस तरह के मैं ख्याल में अगर उस नेटवर्क को किसी तरह से जमा कर ली जाए, they still get people like me and there are many others, like all over the world हैं जो कि हम पहले उसमें थे, मेरे साथ के कम से कम फुजान है, 6-7-8 लोग तो मैं खुद जानता हूँ जो कि मेरे साथ पढ़ाते थे जो कि अब इंडस्ट्री के अंदर है।
So I think they do care. और अगर हम किसी तरह से उनको engage कर लें, so they are willing to provide mentorship, they are willing to provide inputs, but very little is done to kind of tap into that diaspora of people who actually care about, कि university professors को help करना है in improving their skill set. So that's one thing. दूसरा हमने थोड़ा सा इसको again we take one extreme or the other. एक extreme हमने ये ले ली कि यार हर प्रोफेसर को अपनी स्टार्टअप बना लेनी चाहिए. And there were so many sucky startups that came out of those professors, and like including myself, I'm like, मैं अपने आप को इससे बात नहीं कर रहा, लेकिन that was a really bad idea to throw them into that mix, right? कि entrepreneur, हर प्रोफेसर को entrepreneur बन जाना चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये जो mentorship वाला प्रोग्राम है ना कि forget about entrepreneurship, just become better at your job. I think that is what we need to institutionalize. यूनिवर्सिटीज के पास बाय themselves जो हैं कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल्स तो हर जगह पर एग्जिस्ट करती हैं, कोई टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन के भी ऑफिसेज हैं, बट मैंने कोई मीनिंगफुल चीज निकलते हुए उधर से नहीं देखी है. समोसा पार्टीज ही हैं हर क्वार्टर, एक्शन आइटम्स होते हैं लेकिन कोई nobody follows up on those action items, nobody really does anything meaningful with them. So मैंने उसको इफेक्टिव होते हुए नहीं देखा. आप शायद चीजें चेंज होगी. उस जमाने में मैंने बहुत दोनों तरफ से अटेंड की हुई है, एज अ फैकल्टी मेंबर भी अटेंड की हुई है और एज अ इंडस्ट्री पर्सन भी अटेंड की हुई है, तो मैंने उसमें कोई मीनिंगफुल चेंज आते नहीं देखा वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज्यादा इंडस्ट्री से फोकस्ड हैं, ओपन है, टाई है, उनको मैंने ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हुए देखा है, ज्यादा लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड करते हुए देखा है देन द कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल्स इनसाइड ऑफ यूनिवर्सिटीज. तो पर्सनल नेटवर्क पे ही चल रहा है. जिस तरह आपसे कभी मुलाकात हो गई और हम लोगों ने जो आपसे सीखते हैं, तो आपसे कुछ सीख ली, आपसे सेशन हुआ तो वो ज़्यादा यूजफुल रहा बजाय कोई यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया कुछ और किया. उनसे तो कहीं ज़्यादा यूजफुल रहा कि आपके साथ आधा घंटा बैठ गए और आपसे बातचीत कर ली, तो आपको बहुत काम की एडवाइस मिल गई. फिर मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या ऑप्शंस कोई हैं इस तरह की कि इस चीज़ को ज़रा फॉर्मलाइज कर लें ज़्यादा उसको, या मे बी मुझे नहीं पता इसमें वो पैसों वाला इंसेंटिव कहाँ से आएगा, लेकिन कोई इस टाइप का स्टार्टअप कोई या कोई बिजनेस स्टार्ट मॉडल में किसी को भी अभी जरूरत नहीं है. मेरा ख्याल कि पैसा इज द इंसेंटिव. फॉरगेट पैसा राइट नाउ कि वो आपसे पैसे चाहिए. उनको पहले बिल्ड अ स्प्रेडशीट लिस्ट. किसने मना नहीं किया आप तीनों बैठे एक स्प्रेडशीट निकाल के आप डालने शुरू करेंगे, उसमें नाम आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे ना. आई मीन लाइक जरताश है, सुहेब है, मैं हूँ, फुजान है, अफान. आई थिंक यू कैन कम अप विद 50 नेम्स इफ यू kept going on this call for another 30 minutes. You could come up with 50 names. And I think all 50 of them would be willing to do something. अगर उनको forum provide कर दिया जाए, कुछ structure उनको पता होगा उन्होंने क्या commit किया है, how long is it going to be, is there cadence to it, how would they know that they're actually creating a difference, काम को कोई जो वो input दे रहे हैं वो actually follow through भी हो रही है. And then you can't connect them to कि यार ये सबसे फारिग जो मेरा faculty member है इसको मैं इसको लगाता हूँ, ये शायद दो चीजें सीख के आ जाएगा, राइट? नो यू गॉट टू पुट योर बेस्ट वंस विद देम. उनका टाइम बहुत कीमती है, दे आर गिविंग इट बैक टू यू, राइट? आई डोंट थिंक इट्स अ मनी इज द राइट इंसेंटिव ओवर देयर, बट वो एक मेंटरशिप नेटवर्क जो है, व्हाट स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिल्डिंग इट टुडे? अगर आप ये कह रहे हैं कि नवल बना देगा, या आप ये कह रहे हैं कि जीसी बना देगा, या आप कोई और आके बना देगा, कोई कुछ नहीं कर रहा. You folks who are in that model need to build it, but build it with very clear what are you trying to get out of it, what is the commitment that you're asking them, and I'm pretty sure if you put your minds together, you can come up with a list of 50 or 60 people today जो कि academia से industry में गए हैं पिछले 10 साल में, या उन्होंने industry को help किया है to start to build companies and so forth, and they'll all be happy to contribute. फैसला एक और स्टार्टअप भी है पाकिस्तान और यूएस सिलिकॉन वैली बेस, आप जानते होंगे, educative.io. जी. तो उन्होंने 20 के करीब PhDs भी यहाँ से पोच कर लिए हैं, लाहौर की खासतौर से यूनिवर्सिटी से. तो अच्छा काम कर रहे हैं वो. लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं अपने एल्गोरिथम्स के कोर्स में तो उन्होंने दे हैव बीन काइंड इनफ, सो सिंस वी रीच्ड आउट टू देम, उनमें एक आपका हम नाम है खयाम, वो मेरा जानने वाला था, तो उन्होंने वो लाइसेंस दे दिया उन्होंने. अदरवाइज वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड उनका सिस्टम है. तो उससे उनके जो ग्रॉकिंग द इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज वाला उनके बड़ा हिट कोर्सेज है, उसमें तो मेरे एल्गोरिथम्स के से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. तो विच मीन्स कि वो इंडस्ट्री, फॉर इंस्टेंस उन्होंने सिनेरियो बेस्ड कोर्सेज हैं कि अमेज़ॉन एक सर्विस ऐड फीचर ऐड करना चाह रहा है अपनी सर्विस में, तो अब वो उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होती है, उसमें एल्गोरिदम
और उसका एनालिसिस भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो सारा सिनेरियो व्हिच आई एज अ टीचर कैन ब्रिंग इनटू माय क्लासरूम। मैं उनको कोर्स की असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्विजेस भी इवन, या तो करिकुलम के अंदर वी कैन इंटीग्रेट इस तरह की चीज़ें। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज आई थिंक कि जो लोगों को खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि वी कैन नॉट वेट फॉरएवर for the system to kick in. And I think हमारे द पॉइंट थोड़ा स्ट्रक्चर की उसमें जरूरत है, बट आई थिंक हेल्प इज अवेलेबल। वो मेरे बच्चे हैरी पॉटर के फैन है, तो उसमें डंबलडोर कहता है help will be available at Hogwarts to somebody who asks for it, but let me correct myself, help will be available to somebody who deserves it. You know? So I think they're not going to spend time with 99 out of the 100 faculty members in Pakistan. That's the true nature of it. क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे स्वाद का टाइम ज़ाया करने के और वेंट करने के लिए आ जाएंगे, right? These can't be people who are venting. These have to be people who actually want to make a change. और वो आज मौसम अच्छा नहीं है, आज किसी ने पॉलिसी चेंज कर दी, आज गवर्नमेंट चेंज होगी, ये वाले लोग नहीं चल सकते वहाँ पर उनके साथ। Has to be people who are focusing on, यार मैं ये बेहतर कर सकता हूँ, this is under my control, I can change these things. So people who control the controllables, right? वो हैं जो कि इस तरह की mentorship से वाकई benefit करेंगे। lot of disgruntled faculty members were looking for a listening ear to vent. Nobody has time, and I'm like, go home and vent with some family member, because the industry of people do not have time to listen to your venting. So true, so true. मेरे ख्याल से डॉक्टर अली ने हमें एक प्रॉब्ली हमारा नेक्स्ट टास्क असाइन कर दिया यहाँ पे आज पॉडकास्ट में। वो वेंटिंग की ढूंढनी है जगह। नहीं, एक्चुअली आप जो बात कर रहे हैं ये अगेन रेजोनेट्स वेरी स्ट्रांगली एंड नॉट सरप्राइजिंगली विद समथिंग डॉक्टर बिलाल जफर सेड अर्लियर। हमसे पॉडकास्ट की थी कि वो क्वेश्चन आपसे भी दोबारा अभी उस पर आ भी जाते हैं कि हमने पूछा कि कोई स्पेसिफिक फैकल्टी मेंबर इन टुडेज सिस्टम पाकिस्तान में है, जो भी है व्हाटएवर इट इज इकोसिस्टम, वो क्या कर सकते हैं। हम बोला कि वो कोई एक कोर्स पकड़े, कोई इंडस्ट्रियल पार्टनर ढूंढने, बोले कि ये कोर्स मैंने इंडस्ट्री से मिलकर डिजाइन करना है, so that one course becomes relevant in that one classroom. And जो आप कह रहे हैं वो कुछ मुझे लगता है उसी किस्म की बात है, you know, in slightly different words. तो मैं अगर इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं कि पाकिस्तान में universities being what they are, the policy being what it is, and the pace of the evolution of the policies and the universities being what they are. Incentives unfortunately फिलहाल तो वही हैं कि अच्छा ऊपर से आपकी प्रमोशन होगी जब आपके n number of publications आ जाएंगी। एक टीचर क्लासरूम में आज क्या कर सकता है या करना चाहिए क्लासरूम के अंदर, और जब when they are sitting at their desk with a research hat on, staying in the academia, sticking with Pakistan with the academia, क्या चीजें आपको लगता है कि वो लोग जो 99:1 का रेशियो है वो 99 से उठ के 1 वाले रेशियो में आ जाए। एटीट्यूडल चेंज भी हो सकता है, वो डिस्पोजिशनल चेंज भी हो सकता है, या एक्चुअली स्किल और नॉलेज के अंदर कोई चेंज आना चाहिए। चलो नॉलेज को आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर दिया। चलो कोई एक चीज पढ़ा लें जिसकी बेसिस पे लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो सके, कुछ इंडस्ट्री कोई चीज सीख के निकले, फाउंडेशन ही सही पढ़ा लें। जैसे जिन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दिया, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, हाँ ठीक है वही है, लेकिन उसको अगर आप इंडस्ट्री के प्रॉब्लम पे मैप करके पढ़ा देंगे तो कोई गुनाह नहीं है। मैं पढ़ाता था स्टोकेस्टिक सिस्टम, तो ठीक है स्टोकेस्टिक सिस्टम में वी डोंट हैव टू कीप फ्लिपिंग कॉइंस एंड रोलिंग डाइस, राइट? लाइक हम पढ़ाते हैं यार एक बिट है वो फ्लिप होगी, वायरलेस कम्युनिकेशन पे थी, दरमियान में इस तरह का चैनल था, you know, so you could teach these things, somehow make them a little bit more रेड बॉल और ब्लू बॉल निकाल के रेड बॉल ब्लू बॉल जो है उसको निकाल के आपको कंप्यूटर एक्चुअल कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम के ऊपर मैप कर सकते हैं, राइट? कि आपके पास दो तरह के पैकेट्स आ रहे हैं और पैकेट, so I think there's some relevance that we can bring in this our day to day teaching as well. ठीक है, लेकिन I don't have an easy, आप मुझसे मांग रहे कोई easy fix, मुझे कोई easy fix नजर नहीं आता। मैं जो मेरा पार्टिंग थॉट होगा कि अगर हम पाकिस्तान की 80% यूनिवर्सिटीज को बंद कर दें और उनको रिप्लेस कर दें पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स के साथ, जो पैसे उतने ही लें लेकिन एक साल में आपको बेसिक चीजें पढ़ा के निकाल दें, आई थिंक इट्स गोना हैव अ बेटर आउटकम फॉर द नेशन एंड इट्स इकोनॉमी एंड इट्स पीपल देन व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। सो दैट्स अ प्रीटी बैड स्टैटिस्टिक, और ये बाकी मुल्कों में ऐसे नहीं है, ये स्पेसिफिक टू पाकिस्तान फिनोमेनन है। सो आप जब उनसे 1.5 साल पहले मुझसे ये बात करते मैं शायद से आर्ग्यू करता, लेकिन ये बेसिकली इन पॉडकास्ट में लोगों से बात करके ना, मतलब व्हाट यू आर सेइंग फील्स इनएस्केपेबल नाउ। तो हाँ नहीं, आप खुद सोचें 80% को अगर आप बंद कर देंगे एंड यू रिप्लेस देम विद समथिंग रिमोट, डिस्टेंस लर्निंग,
इवन कोर्सेज दे दें उनको, यार खुद पढ़ लो और खुद ये सीख लो, ये असाइनमेंट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये खुद कर लो, एंड प्रोवाइड देम सम इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे कैन डू इट ऑन अ रियल जैसे क्लाउड और सम सॉर्ट ऑफ अ रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक आपके लोगों की जो है वो ठीक है फाउंडेशंस नहीं होंगी, लेकिन फाउंडेशन तो अभी भी नहीं पढ़ा रहे यार। सो द सैड पार्ट इज कि वो फॉर 4 years में हम उनको सिर्फ जो है ना, लाइक वी आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी, एंड दे आर वेस्टिंग देयर मनी और देयर पेरेंट्स मनी। सो आई थिंक इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मेरे पास कोई इजी फिक्स नहीं है। I do see some people who are committed to the cause, who want to make a meaningful change. उनके लिए मेरा यही है कि find good mentors, work with the industry, tie your courses to something that is somewhat tied to the real world, ताकि वो कम से कम उस क्लासरूम से जो लोग निकल रहे हैं वो अच्छे प्रोड्यूस। अगर आप सिर्फ रिसर्च करना चाहते हैं then do the best research, लेकिन ये अप्लाई वही 100 में से 1 बंदे के ऊपर होती है, और 99 जो है ना बाकी उनका अनफॉर्चुनेटली ये फीडबैक जो है ना वो जस्ट fall on deaf ears. So मेरे पास unfortunately कोई easy fix नहीं है। मेरा easy fix यही है कि इनसे उठा के आप पकड़ाएं जो कि वाकई लोग जो है ना they are doing it as a business and they don't do a good job, they'll go out of business. Simple. Like they have an incentive to fix the system, make it better and more relevant than these people who have no incentive to make it better or more relevant. और मेरे ख्याल में वो खुद बहुत ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि अगर हमारे लोग एम्प्लॉयमेंट उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और उन स्टार्टअप्स के थ्रू बेहतर आनी शुरू हो जाएगी, then ऑटोमेटिकली जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जो प्राइस टैग पे लोग कहेंगे यार व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डूइंग इट। मे बी नॉट। अब पेरेंट्स भेजते हैं यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट yeah, I think there's a fundamental rethinking required कि why is it that we can shut down 80% and not really create if 80% of universities go away, they don't create a dent in the economy. अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग आपने हाँ बोलिए। ये इंटरेस्टिंग आपने स्टेटमेंट दी है कि सिंस इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि शायद पॉलिसी स्ट्रक्चर्स और इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी लेवल पे वही है, पब्लिश और पेरिश टाइप वाली सिचुएशन, एंड येट यू से कि पाकिस्तान में 80% को बंद करके पॉलिटेक्निक, लेकिन ये दिस इज नॉट ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब कुछ चीज फर्क भी तो है, तो वो उसकी रीजंस क्या हो सकते हैं? यानी पाकिस्तान में इतनी परवर्स क्यों सिचुएशन हो गई? क्वालिटी और वो क्वांटिटी भी उन लोगों की जो क्वालिटी रखते हैं। मैं वेरी इंटरेस्टिंग वही आपने पॉलिटिक्स का जिक्र किया, बिकॉज मैं जिस प्रोग्राम में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं I've been here for a couple of years, लेकिन I've been discussing and thinking कि ये चीज़ पाकिस्तान में ट्रांसफर हो सकती है या किस फॉर्म में हो सकती है। It's called a graduate apprenticeship program. तो हमारे स्टूडेंट जो हैं from like before they start their undergrad studies, they have to be hired by one of the companies around Glasgow, and they are there basically full-time employees as apprentices, and there's a like 80-20 split. So 80% time over 4 years is at the company, and they get credits for that, and 20% time they are released to us and we teach them courses. They take less number of courses over the years, so if width कम हो जाती है, they are very focused on the technical subjects, but they basically graduate with an equivalent academically equivalent degree as well. तो ये this is like जो मतलब vocational but you know graduate degree है ये, और इस तरह के models ये जो degree बनी है, this was based looking at models from Germany, from Canada, from certain other countries as well, जहाँ पे different manifestation नजर आ रही हैं उसकी। तो एक तो आपसे मैं इस तरह के मॉडल के बारे में भी फीडबैक लेना चाह रहा था कि do you think there is something in such models applicable in Pakistan? और उससे मैं I think I'll let you answer this first because एक there's a more abstract question on top of that, लेकिन मैं पहले आपको अगर इस पे आपका फीडबैक लूँ, इस तरह के प्रोग्राम आपको लगता है पाकिस्तान में चल सकते हैं? और try something different from what it is right now. मेरी जो अपनी फंडामेंटल है कुछ तो ट्राई करें ना, ठीक है, कोई भी चीज यार, फेलियर is part of the game. I'm like, if you want to change things, I'm like, you're gonna fail. If you want to do something meaningful, you are going to fail, and you're going to fail catastrophically. It's okay to learn from the failure, run the next experiment, learn from the failure, run the next experiment. I think जो हमारा कल्चर और हमारा जो टेक्नोलॉजी स्किल सेट और इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दुनिया से, and that's okay to try something. Do it fast, fail fast, have very clear metrics for success and failure, and then keep iterating on it until it succeeds. But I think trying something different is due. Like, ये नहीं चल सकता. More of the same is not going to fix the system. That's so true.
एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट चल रहा है और चली जा रहा है। चल जा रहे हैं, हाँ। एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जो मजीद फेल होता है, वो मतलब हम समझते हैं कि ये ही है बॉटम लेस फिटिंग है, यहाँ पर ज्यादा फेल नहीं होता, उससे ज्यादा फेल होता है every 5 years, right? So I think do something different, even if you fail, it's okay. अभी वाले को से बड़ा अच्छा करें। इससे if I come to that question, से मैं काफी देर से क्वेश्चन को किए जा रहा हूँ, लेकिन ये एक चीज जो रेजोनेट आपकी डिस्कशन में काफी दफा हुई है, पहले भी हुई है हम लोग आपस डिस्कशन में, आपने कुछ जिक्र किया कि यहाँ पे इंसेंटिवाइजेशन नहीं है टू चेंज टू इम्प्रूव, और सेल्फ करेक्शन का भी जिक्र आया। हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं स्पेशली, अब नौमान यूके कुछ अर्सा से लंदन में है, मैं यहाँ पे ग्लासगो में देख रहा हूँ, सारे इश्यूज जो पाकिस्तान में हमने देखे, ऑब्जर्व किए, सुने लोगों से एनेक्डोटली, वो सब यहाँ नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि एब्सेंट है। आप उसमें पेटी पॉलिटिक्स ले लें ऑफिस की, आप उसमें रॉन्ग काइंड इंसेंटिवाइजेशंस एंड द पुश टू पब्लिश और पेरिश, और उसमें सब पार चीजें पब्लिश करना शुरू कर दी आपने। लेकिन समथिंग इज डिफरेंट कि यहाँ पे कुछ सेल्फ करेक्शन हो जाती है, या जैसे आप कह रहे हैं चीजें बॉटम लेस पिट में के नीचे की तरफ नहीं चली जाती। एट सम पॉइंट somebody kind of looks at his, no, something is wrong, something is amiss here, let's correct this। कोई कमेटी बैठ जाएगी, कुछ हो जाएगा, और कोई प्रोग्राम में चेंज आ जाएगा, या कोई नए किस्म का प्रोग्राम निकल के आ जाएगा, या somebody will come and say this is not on, this is our graduates are not coming to the college that they're supposed to come to, और फिर कोई सिस्टम अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ करेक्ट एटलीस्ट कर लेगा। ये चीज यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व की कि all of the issues that I saw in Pakistan were here, and not surprising because eventually हर जगह humans ही बैठे हैं, humans are humans। लेकिन क्या वो रीजन है कि पाकिस्तान में वो सेल्फ करेक्शन नहीं आती, और चीजें seem to not just become embedded at a certain level, वो kind of sometimes start becoming even worse over time। Obviously ये एक this is a generalization, पाकिस्तान में बहुत सी चीजें यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्री में बहुत अच्छी भी हो रही हैं, लेकिन somehow अगर आप इसको क्वांटिफाई कर सकें किसी तरीके से, तो पाकिस्तान में ये सेल्फ करेक्शन जो है वो मे बी 2 पे बैठी है या 10 पे बैठी है, बाकी दुनिया में मुझे 50-60 में नजर आ रही है, बीइंग वेरी क्रूड अबाउट इट। वो एक तो ऑब्वियसली मतलब दिस इज आवर व्यू या मेरा व्यू कह लें, अभी आपको साथ रेजोनेट करता है ये व्यू, मे बी हैव डिफरेंट व्यू, और अगर है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर देन? जी, आई एग्री विद यू। मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम है वो अगेन गोज बैक टू द क्वालिटी ऑफ पीपल। अमेरिका में जब हम ग्रेजुएट करते थे, द एब्सोल्यूट टॉप इन एवरी लैब एवरी ईयर जो ग्रेजुएट होते थे वो एकेडमिया में जाते थे, तो वो है तो ह्यूमन, वो पेटी पॉलिटिक्स भी करेंगे, लेकिन एट द फंडामेंटल लेवल दे गो टू academia for the prestige, they go there, make less money than their peers because they believe in some mission, और ये एग्जैक्ट प्रिज्म ऑपोजिट है वहां पर पाकिस्तान में, जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, वो कहते हैं यार पढ़ा लो यार, अब तो पढ़ाना शुरू कर दो कहीं पर, बिकॉज आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इट्स लाइक अ फेलियर, लाइक एडमिटेंस ऑफ डिफीट, यार कुछ नहीं आता तो आप पढ़ा लेंगे पे जाके। सो आई थिंक दैट इज द क्वालिटी, जो बार है वो दैट इज द फंडामेंटल जो चीज है। एंड देन दैट्स व्हाई पीपल, एक ही बात है, उसका जो एक रिपल इफेक्ट है उसके बाद, ये आप इंडस्ट्री में भी चले जाएं और आप इसमें भी एकेडमिया में भी बड़ा विजिबल है, मैंने इंडस्ट्री में भी बहुत जगहों पर देखा है, वो ये है कि ए प्लेयर्स, आप ए प्लेयर्स की टीम बनाएंगे, they'll always hire A+ players, always, like they'll just get people better than them, continuously they'll get people better than them। Amazon की हायरिंग बार ये थी कि उसमें हम किसी भी कैंडिडेट को ग्रेड करते थे, तो एवरी इंटरव्यू हैड टू गिव हिम ऑन एवरी कॉम्पिटेंसी जिस पे उसको वैलिडेट किया था, कि बिलो द बार, एट बार और अबव द बार, and the bar was this person is better than 50% people that I know in Amazon today at this level in this role। So that's how they always continuously अपनी बार को ऊपर पुश कर रहे थे। और जो B player है ना, वो हमेशा C+ और C- को हायर करेगा, because they're threatened by people above them। इसका एक रिपल इफेक्ट है, जो बैड DNA है ना, इसका एक रिपल इफेक्ट है। It's not कि just they suck, they hire suckier people after them। और अगर वो गलती से घूमता घुमाता कोई बेचारे को किसी लड़के कंस्ट्रेंट्स हैं, वो आ जाते हैं एकेडमिया में या उसी यूनिवर्सिटी पढ़ाना भी शुरू करते हैं, उनकी वो जिंदगी दे मेक इट मिजरेबल, दे bury them, they can't even, insecurity issues आना शुरू हो जाते हैं, security issues हैं, they'll bury them in paperwork, they'll create so many hurdles for them। So that is just generally true in academia as well as industry, कि पहली बात तो ये कि पहली जो क्वालिटी आ रही है बहुत लो है, एंड देन द कॉन्सेप्ट कि जहां पर भी B प्लेयर्स होंगे वो हमेशा C- को हायर करेंगे, वो A को नहीं हायर करेंगे, और A हमेशा A+ को हायर करेंगे।
that comes into the picture as well. तो ये सिलेक्शन से कहानी स्टार्ट होगी ना, और आगे तो फिर बिल्ड अप होगा. तो what I understand, it makes so much sense कि आपने ये जो क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 50% करंट एम्प्लॉइज से this guy came out as better than them. लेकिन ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट कॉल है ना, राइट? एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी आपने इंटरव्यू किया है, जो भी टेस्ट किया है, बट ये एक जजमेंट है, ये एक सब्जेक्टिव कॉल है, राइट? आई थिंक कि एकेडेमिया में और ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेक्शन है, इसमें वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं कि ये हमने कोई जजमेंट नहीं करनी, हमने कोई नंबर रख लिया हुआ है जो प्रॉक्सीज हैं सारे, वो नंबर कोई मीट कर रहा है तो आने दो. तो फिर वो अजीब अजीब किस्म के लोग सिस्टम में आ जाते हैं. फिर वही होता है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो फिर उससे मजीद एक लेवल नीचे के लोगों को लेके आते हैं एंड सो ऑन. डॉक्टर अली, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा. मैं उस वक्त से सोच रहा था जो आपने बात की थी ना, कि इस पे हम बात करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को 80% यूनिवर्सिटीज़ को वोकेशनल इंस्टीट्यूट से रिप्लेस कर दें. तो आपकी वो बिल्कुल अलाइन होती है बात, वो जो आपने एम्प्लॉयबिलिटी वाली बात भी की थी, और बड़ा क्लियर क्राइटेरिया कि वोकेशनल इंस्टीट्यूट से एम्प्लॉयबल होने चाहिए, ताकि आप जो मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी जगहों पे जॉब करें. जस्ट इमेजिन कि हम साल 2 साल में कुछ भी होता है, ये हो जाएगा ना, फिर जो वो 20% जो यूनिवर्सिटी बची है, उसके ऊपर भी आप यही वाला एम्प्लॉयबिलिटी वाला मैट्रिक अप्लाई करेंगे, या फिर उसका रोल कुछ फंडामेंटली डिफरेंट होना चाहिए? 1% में आई बिलीव कि वो ठीक पढ़ा रहे हैं काफी सारे लोग अभी भी. मैं मतलब बड़ी ब्रॉड सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरी जनरली पर्सनालिटी आई मेक लाइक सम ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक्स, लेकिन हाँ अभी भी लोग काफी सारे जो अच्छा पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाते रहेंगे. ऐसे लोग हैं जो कि IEEE ट्रांजैक्शंस में पब्लिश करते हैं और हर साल पब्लिश करते हैं, एंड वो करते रहेंगे. तो वो जो बाकी 20% है, कंसोलिडेट कर दें उन लोगों को, वो सारे ए प्लेयर्स आपके जो है ना, उनको उधर बिठा दें. They will find other people like them or better than them, and those 20% are going to be foundation जिसने सीखनी है उसके लिए वो they will make something which is going to be much more meaningful. बाकियों को ये अगर तो हम कहते हैं वो 4 साल में कुछ ना कुछ फाउंडेशन सीख के निकल रहे हैं, there will be something else. They're not learning it, so they're basically wasting all of their time and then they learn on the job, right? So मैं उनके लिए शॉर्ट सर्किट करना चाहता हूँ. बाकी somebody believes क्योंकि फाउंडेशन चाहिए, कोई इंडस्ट्री उसको सकता है फाउंडेशन होना चाहिए, या कोई बंदा जो रिसर्च करना चाहता है, then they go to a place जहाँ पर वो इंस्पायर हों and they can do those kind of things. तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जगह from the society it diminishes. मेरा मैसेज ये कह रहा हूँ कि वो those will just consolidate your top talent in those and just then really take care of them, like literally, you know, like no industry should be able to ever beat the price point at which these guys are teaching or doing research and so forth, you know, just like really make them super happy. 80% बजट आप दें उनको. Why not, right? Like उन लोगों को just make them so happy that they don't even want to go to America to work there, right? America professors ज़्यादा better salary देते हैं. तो आई थिंक बहुत ही pragmatic और practical, और I think there's a food for thought for everyone जो भी listeners होंगे या audience होगी. ये तो absolutely. और मतलब बाकी सबकी क्या बात है, मैं मतलब मेरा बीच में बैक ऑफ माइंड बहुत सी चीजें अब अपने पर्सनल प्रोफेशनल जर्नी के साथ चल रही हैं, और मेरे ख्याल से और आगे बढ़ेंगी इससे. आई थिंक some things for us to maybe think about as well from the platform of ReCompute के हम लोग स्टार्ट ऑफ हमने सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट से किया हुआ था, लेकिन इट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग कि मेरे कितने व्यूज इवॉल्व किए हैं इन पास्ट कपल ऑफ इयर्स बाय टॉकिंग टू पीपल लाइक योरसेल्फ. लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक इसी प्लेटफॉर्म से विल ट्राई टू मूव बियॉन्ड, not beyond, but you know, in addition to this, just like about Dr. Ali कर रहे थे, I think we should think about that as well. तो मेरे ख्याल से हम लोग we are hitting on an hour and a half now, or if I'm not wrong, आपका is it past midnight already at your place, or maybe approaching? Almost there. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हमने जो सोचे थे आपसे डिस्कस किए थे, मोर लेस हमने अपनी इसी क्या कहते हैं ऑर्गेनिकली कवर कर ही लिए हैं. और एक I mean, I think हम तीनों जो हैं होस्ट एग्री प्रॉब्ली करेंगे कि एक बड़ा क्लियर नैरेटिव आपकी तरफ से आया हमारे पास. और टू बी ऑनेस्ट, लाइक यू नो, सिटिंग हियर नाउ वेरी हार्ड टू फाइंड, even if I want to play devil's advocate, I'm finding it difficult to find any arguments there. But एक क्वेश्चन जो हम हमेशा करते ही हैं कि because
obviously हम लोगों की react, back and forth से ही discussion आगे बढ़ी थी, but was there something in your mind keeping the audience that this is for, जो आपके ख्याल से has been left unsaid that you want to share before we sign off? नहीं, मेरे ख्याल में whatever I had to say, I've already said it. I would, since I've been here for the past 1.5 hours and it's almost midnight, I would like to take something that I can take away from this as well. Okay, which is I'm building a startup, I'm hiring people, and we're building on some of the most revolutionary, groundbreaking technology in the world. जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, students, as faculty, as peers, would vouch for it. So if you're looking for an opportunity like that, like ping me on LinkedIn, or everybody has my LinkedIn में मेरा email address भी है. So I would love to hear from people. हमने already कुछ लोगों को पाकिस्तान में as contractors hire किया, हम और लोगों को भी करेंगे. So इसलिए जो है ना, if anybody around the world, by the way, this is not just specific to Pakistan. If you want to work on something interesting in the cloud space, I would love to hear back from you. Excellent. थोड़ा सा एक वो आइडिया बता सकते हैं कि किस टाइप का स्टार्टअप आप करने जा रहे हैं, तो जो अगर कुछ ऑडियंस में कि लोगों को क्लियर हो जाए कि किस किस्म का काम है, जो स्पेशली अगर आपको नहीं भी जानते, उन लोगों को जरा क्लियर हो जाए कि किस किस्म का आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं. It's still in stealth, but एक नया सिस्टम है open source is called Kubernetes. तो Kubernetes जो है ना, जिस तरह आपके Linux होती थी, जो कि एक सर्वर के ऊपर आपको मैनेज कर देती थी, bunch of servers हैं, 1000 millions, तो उनको orchestrate और मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है by default वो Kubernetes है. तो it's one of the most fundamental technologies दुनिया में. Massive migration, जितना Linux पे हुई थी migration from Solaris और Sun के सिस्टम से या IBM mainframe से and Windows server से, उस तरह की एक migration हो रही है towards Kubernetes now from other platforms. So उस space के अंदर है. Unfortunately, can't share more, but yeah, if somebody is interested, I'm happy to give a little bit more color on those one-on-one calls. तो हम लोग नो ये YouTube पे पोस्ट करते हैं, तो जो गेस्ट का LinkedIn प्रोफाइल को, तो जो पब्लिक प्रोफाइल है उस पे वो तो हम लिंक वहाँ पे डालते हैं. बट इफ एनीथिंग एल्स यू वांट अस टू लिंक as under the YouTube video, just let us know and we'll be very happy to put it there. Thank you. Let's start off there. Excellent. So I think with that, इसको close करें. So once again, thank you, Dr. Ali. Like Junaid was saying, मतलब not just saying it, बाकी food for thought. Certainly for us, there's absolutely no doubt about that. और I hope हमारे listeners के लिए भी food for thought as well. So, okay. Once again, thank you very much for coming. For having me. And thank you for bringing clarity. और हम इस forum से हम clarity of thought ही, मतलब food for thought तो है, but clarity एक चाहिए होती है ना. Thank you so much for bringing that. Really. Thank you for giving me the opportunity to speak here. Thank you, Dr. Ali.